Hello guys, how are you? I'm just checking whether we are live or not. Just give me a minute. I to hope we'll be live. Yeah, so yes guys, we are live. Okay, चलो cool. कैसे हो आप सब? I hope सब बहुत ही अच्छे होंगे, है ना? So कैसे चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी. And students, अब सितंबर एग्जाम्स के लिए तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम टाइम बचा है. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ टाइम नहीं बचा है तो इसमें भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, राइट? सो इट्स वेरी लेस डेज पेंडिंग विथ यू ऑल. बट स्टूडेंट्स, हाँ देखो, द वन हु इज डूइंग फॉर सितंबर 23 एंड द वन हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर दिसंबर 23 नीड नॉट वरी. अभी भी अगर जितना भी टाइम है ना स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग स्टिल एन एम्पल ऑफ टाइम. अगर आप डेज कैलकुलेट करो तो जस्ट अ रफ डेज मे बी नॉट इवन 10 days, बट अगर 10 days को कैलकुलेट करो ना स्टूडेंट्स, यू कैन डिवोट योर टाइम. आप अपने टाइम को ना एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो. या दिस इज द प्लान गाइज, ऑल हैव टू मैनेज, ऑल हैव टू एडजस्ट दिस लास्ट प्लान. ओके, लाइक इट्स अ प्लान स्ट्रेटजी गाइज. क्या है स्ट्रेटजी, क्या होती है? यू हैव बाय नाउ अंडरस्टूड कि मुझे सेक्शन ए अच्छे से समझ में आता है, सेक्शन बी या सेक्शन सी. सो जिस स्टूडेंट को सेक्शन सी समझ आता है ना स्टूडेंट्स, तो उनके लिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को टैकल करना इज़ वेरी ईजी. वेरी मीन्स वेरी. जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हम सेक्शन सी में करते हैं ना, उसी का छोटा वर्जन है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सो टुडे, आज मेरा ऐसा प्लान था कि फर्स्ट डे तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ माई ACCA रिसोर्सेज, मुझे कहाँ से प्रैक्टिस करनी है. बट एक चीज़ क्लियर है, वो डिस्क्लेमर है स्टूडेंट्स. अगर आप पास्ट प्रैक्टिस करते हो पेपर का, राइट, इफ़ यू आर डूइंग द पास्ट पेपर प्रैक्टिस, आप उनके आंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, राइट? वाई? बिकॉज वो अपडेटेड नहीं है. अपडेटेड मीन्स मैम उनके जो रेट्स वो टाइम पे प्रेवलेंट थे, उन्होंने उसी रेट्स को कंसिडर करा है. हाँ मैम वी नो. तो हमारे पास एक रेट शीट आती है या टैक्स रेट्स विच इज़ अवेलेबल इन द एग्जाम ऑल्सो, तो हमें उसको कंसिडर करना है एंड उसके साथ मल्टीप्लाई करके वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. सो ये चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना होगा दैट द पास्ट पेपर्स यू आर डूइंग इट्स नीड टू बी अपडेटेड. ओके, सो बाय नाउ हमने ना फर्स्ट डे पे देखा था लाइक माई रिसोर्सेज, माई स्टडी हब, कहाँ से आई हैव टू प्रिपेयर, व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन सिचुएशन वी हैव टू गिव. इट इज़ बेसिकली कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. सो इफ़ यू वांट यू कैन गिव आपके घर से, बट इफ़ यू वांट कि आप सेंटर पे जाके लिखना चाहते हो तो इवन दैट इज़ बेटर. And I will always insist you guys, go to the center and then give the examination. ऐसा क्यों मैम? बिकॉज देखो हमारे घर पे ना मैनी टाइम देयर इज एन इंटरनेट इशू, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है विच में बॉदर अस, राइट? बट अगर आप सेंटर पे लिखते हो ना, इन केस देयर इज एनी इशू ना, सो दे विल बी टेकिंग हेड ऑफ इट. सो इट विल नॉट बी ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप पे नहीं आ जाएगा, वो लोग वहाँ पे वो चीज़ का ध्यान रख सकते हैं. ओके, फिर जब सेक्शन हमने फर्स्ट डे पे ये चेक करा था, ऑन द सेकेंड डे वी अंडरस्टूड दैट सेक्शन ए बी सी में से सेक्शन सी इज समथिंग जहाँ पे आप मार्क्स इंडिविजुअल पॉइंट्स पे भी स्कोर कर सकते हो. मतलब अगर आपको पूरा आंसर करेक्ट नहीं आया तो भी इट्स ओके. अगर आपको पॉइंट में भी आंसर्स करेक्ट आया ना, तो स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं मार्क्स. हमने चेक किया है इंडिविजुअल आंसर्स. मैम वो ज़ीरो लिखने का भी, या स्टूडेंट्स ज़ीरो लिखने का भी मार्क्स मिला, हाफ. सो अगेन ये तो हमारे लिए बोनस है, बिकॉज सेक्शन ए एंड डी में अगर आपका करेक्ट है तो यू गेट मार्क्स. स्टूडेंट्स अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते. ज़ीरो मतलब पूरा ज़ीरो. क्यों मैम? क्योंकि वहाँ पे MCQs आते हैं. देयर आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें वो लोग एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. दे विल गिव यू सम ऑप्शन एंड आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. एंड टू बी फ्रैंक स्टूडेंट्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तो आपने बोला कि मैम हमने तो सेक्शन सी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया. सो व्हाट वी इनिशियली डिड वाज हमने ना स्टूडेंट्स वो पेपर स्टार्ट किए विथ अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन, जो कि सेक्शन सी में पक्का आने वाला है. तो मतलब आप देख ही सकोगे, आप तो वो क्वेश्चन देखने ही वाले हो. आई एम गिविंग यू अ गारंटी. सो वो सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन है वर्थ 15 मार्क्स, वो तो मैम इनकम टैक्स से आएगा. मैम बाकी देयर वाज वन मोर 15 मार्क का क्वेश्चन जो हमारे लिए कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा. एंड मैम बाकी एक जो क्वेश्चन है विच इज 10 मार्क का, वो देखो कहीं से भी आ सकता है. ओके, सो हमने मैम क्या किया था इन द सेकेंड क्लास ना, हमने समझ लिया था इन द सेकेंड रिविजन सीरीज
what am I going to do with the computation of income tax. So हमने income tax को compute करा, उसके बाद we have did like a lot good questions which are important again from the papers. So papers में कैसे question आता है उसको हमने solve किया, and the next day that is the third day हमने question solve किए. Fourth day students we have solved the questions from corporate tax, वो भी जो पेपर में आए थे. सो बेसिकली आप अगर एनालाइज करो, अगर आपके पास पेपर्स आप सर्च कर रहे हो तो स्टूडेंट्स हमने सितंबर दिसंबर 22-23 वो वाला कंप्लीट कर लिया पेपर. अलॉन्ग विद दैट मार्च जून 22-23 भी पेपर हमने करा है. ओके, सो वी हैड अ गुड आइडिया फॉर दैट. ओके, नाउ मैम सेक्शन सी पे तो मैम अभी हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट क्या हम एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाउ इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी गोइंग टू गो विद अस? सो या, व्हाई नॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेपर. सो मैंने ना, मेरा आज का एजेंडा है विच इज़ बेसिकली द लास्ट डे फॉर द डे टुडे. सो वी विल बी गोइंग अहेड विद सेक्शन ए बी एंड थोड़ा सा कंसेप्ट हम देखेंगे फॉर सी एंड देयर स्टूडेंट्स. पक्का एट अ गुड पेस ऑफ रिविजन वी आर गोइंग टू एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स मैं आपको ना एग्जाम के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी दूंगी. या, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू ऑल. आपको तो पता ही है ना, हाउ इज द प्लेटफॉर्म ऑन CBE जस्ट विजिबल एट? या, आई तो थिंक सो. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू. इफ यू कैन चेक, this is what my agenda is, this is what my plan for the day is. Give me a minute. I am going to do today tax UK specimen. Guys, it's UK specimens. Specimens are something which just came a very new thing for us. So वो हर बार आते हैं and that is basically Finance Act 2022. तो recent specimen पे मैं emphasize करूँगी. Okay. I just wanted to show you once again the CBE platform for those जिन्होंने already previous classes नहीं देखे हैं and जो थोड़े से new है, right? थोड़े से न्यू है मीन्स क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ए टैक्स जहाँ पे आपका नॉलेज ऑलरेडी है फॉर लाइक गिविंग द पेपर्स एंड कैसे करना है. इट्स टैक्स बेबी, इट्स टैक्स. सो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट. आई जस्ट वांट टू ओपन इट. मे बी अब आपको दिखेगा, लेट्स सी. या, ओके, सो दिस इज़ माई क्रोम. आई जस्ट ओपन माई CBE platform. Where again students ACCA tutor resources, no exam support. Yeah, we can do for exam support. Okay, exam support में आप चाहोगे तो whatever things are beneficial for you आपको वो exam supports आ जाएंगे. Cool. So I just open that over here. आपको login ID password मांगा जाएगा, वो तो obviously आपके पास होगा, so you all have to type that. मेरे पास नहीं है, so again I am typing my students login ID password. So then मेरे स्टूडेंट तो बहुत ही बोलेंगे मैम आप हमसे भी ज़्यादा आप हमारी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करते हो, बट देन कैन नॉट हेल्प इट आउट गाइज. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वी आर ओवर हियर अवेलेबल विथ व्हाट थिंग्स गाइज. यहाँ पे ना मैम हमारे पास सब कैटलॉग्स है. ओके, माय सब्जेक्ट्स एंड ओवर हियर देयर आर सम होम मार्क एंड एवरीथिंग. कूल. टुडे वी आर गोइंग टू डू टैक्सेशन. बहुत सारी कंट्रीज क्या आएंगे बट वी आर अवेयर कि हमें UK क्लिक करना है. या UK ACCA ऑफिशियल रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट्स स्पेसिमेन एग्जाम्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू विद स्पेसिमेन एग्जाम्स. यहाँ पे मुझे असाइन करना है. ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम एट अ प्लेस वेयर लाइक देयर इज लॉट ऑफ कोल्ड एंड रेनिंग, सो मे बी उसकी वजह से इम्पैक्ट है. ओके, सो मुझे असाइन करना है. आई एम असाइनिंग इट. तो यहाँ पे अनअसाइंड आ जाएगा क्योंकि आप जहाँ पे चेक करोगे ना होम में असाइन मटीरियल्स, तो जो आपने असाइन किया है वो आपके लिए विजिबल होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स, आई एम सो सॉरी गाइस, टैक्स स्पेसिमेन रिज्यूम, आई जस्ट वांट अ रिज्यूम. सो स्टार्टिंग में ना दे आर गोइंग टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन एंड देखो कि फर्स्ट सेक्शन A is important. What you have to do is guys, this is gonna worth 30 marks with only 15 objective type paper guys, only 15. अगर आप चेक भी करो ना, अगर एक MCQ के लिए if one MCQ if you take even 2 minutes guys, within 30 minutes you will wrap up. But I have made a plan, I have made a strategy, like ये मेरे आपके मिनिमम मिनट्स है, so आप 2 minutes भी पूरा इसमें डिवोट नहीं कर सकते. अगर आप चेक करोगे ना, आई शो यू दैट based on the markings. Yeah, wait, going to further. Students, are you able to see William is a self-employed, he's a tax adjusted? Yeah, cool.
So what is a class 4 NICs, and also they have given some options A, B, C, D, whatever it is. We can go and press something like I have pressed 4962. Cool. मैंने next press कर दिया. Cool. वैसे ही I have given second answer also. I have pressed that. Everything in B आ रहा है, so it's okay. Next. After going to next, at the end it will be, after completing the paper, it will be end the exam. Okay. So मुझे end करना है मेरा paper. Okay, I'll just go because it is very big ना. 36 questions are there. That. Yeah. So students, हम ये करने वाले पेपर, यार हम ये करने वाले हैं. Okay, I'll show you कि end करने के बाद कैसा आता है. Okay, wait. Before going to that, let us first go to the paper. Wait. Okay, exam support. Okay, give me a minute. I'm doing some work in the back end. Yeah, because I wanted to show you all. आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अवेलेबल होती है एग्जाम्स में? या पता है ना स्टूडेंट्स? या परफेक्ट दैट मटेरियल इज़ अवेलेबल. सो आपने कभी पढ़ा है वो मटेरियल क्या है? कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैम एग्जाम के टाइम में विल चेक अबाउट कि कौन सी चीज़ गिवन है. स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये आपकी बहुत टाइम वेस्ट हो जाते हैं. पता है अगर आपने वो प्री सीन नहीं होता है, आपको पता नहीं है कि मतलब आपको क्या चीज़ लर्न नहीं करना है. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ अवेलेबल है एंड क्या हमें लर्न नहीं करना है. या इफ़ आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल, या आई एम नॉट सो वेल बाय द वे. It's cool. So yeah, I've just opened it. Maybe that could be visible to you all. It's an Adobe Reader, the PDF. Yeah. So if you can check now, students, if you can check the students, this things ना, मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें हाईलाइट भी करा हुआ है. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ टैक्सेशन यूके? सो स्टूडेंट्स ओवर हियर आपको ना ये चीज़ दी रहेगी. ओके, सो टैक्स रेट्स एंड सम अलाउंसेस. कूल. सो व्हाट आर टैक्स रेट्स? अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी अर्निंग्स आर लाइक बेसिक मीन्स स्टूडेंट्स कितनी आएगी? इट्स दिस 1 to 37,700. So they have to pay 20% of the tax, guys. 20%. But अगर किसी इंडिविजुअल की इतनी ही अर्निंग है, along with that he is having some dividend income also, so he has to pay tax on 8.75%. स्टूडेंट्स, आपको पता है एक चीज़, ये तो डिविडेंड इनकम है, वो तो मुझे समझ में आ गया. बट ये डिविडेंड इनकम होने के बाद, ये डिविडेंड इनकम होने के पहले मुझे ये भी तो चेक करना है कि मैम डिविडेंड पे क्या कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा? स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. मैम आपने तो बोला था कि डिविडेंड इनकम पर एग्जेम्प्ट. डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट किसके लिए है? खाली कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं. सो इंडिविजुअल के लिए डिविडेंड्स विल बी निल टिल व्हाट अमाउंट? डिविडेंड्स निल हो सकते हैं. डिविडेंड्स विल बी निल टिल 2,000 pounds. सो इनिशियली 2,000 pounds तक डिविडेंड निल है. अगर डिविडेंड इज बियॉन्ड दैट 2,000 pounds, गाइस 8.75% उस पर टैक्स पे करने आएंगे. ओके, सो दिस आर सम answers which we know that is given. Okay, फिर अगर higher tax rates are students, so they have to obviously pay more than that tax, so 40% and it goes beyond and on. Cool. फिर we are having some personal allowances. जैसे कि अगर कोई individual is earning something good, हाँ, is earning, but उसकी earnings पता है 1 lakh से कम है. अगर उनकी earnings is less than 1 lakh pounds, तो उनका पूरा personal allowances they get as a benefit, right? तो उनकी टोटल सैलरी में से या तो टोटल उनकी इनकम में से, टोटल टैक्सेबल इनकम में से व्हाट वी रिड्यूस इट, हम ना 12,570 एज अ पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करता है. बट मैम अगर किसी की सैलरी मोर देन 1 लाख है और किसी की इनकम मोर देन 1 लाख है, तो देन यू नो वी वर डूइंग अ कैलकुलेटिव पार्ट. वी यूज टू फाइंड आउट ANI, yes, annual adjusted net income, right? Just maybe take the salary, we take the standard of 1 lakh. जो भी डिफरेंस आया ना स्टूडेंट्स, उसका 50% डिसअलाउड भी है. ओके मैम, कैप लिमिट था कि इसके ज़्यादा सैलरी आएगी ना तो मिलने ही नहीं वाला है. 125, 140 गाइस, 125, 140. अगर आपको ये लोन हो जाता है ना 125, 140, आपका एग्जाम्स में बहुत टाइम सेव होता है.
सच में बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट बार बार नहीं करना पड़ता, अच्छा इस पर पीए मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मिलेगा। अगर इफ इट इज़ 125 140 से ज़्यादा पक्का नहीं मिलने वाला है, पक्का मतलब पक्का नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है पूरा प्रोसीजर करके, इजंट इट? या स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ 1260। याद करो ये कहाँ पे हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स? ऑल दिस इज इनकम टैक्स, ऑल दिस इज इनकम टैक्स। याद करो याद करो याद करो। या परफेक्ट। अगर एक मैरिज अलाउंसेस में देयर इज अ स्पाउस या बोथ द स्पाउस लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और एल्स अगर वो सिविल पार्टनर्स हैं, सिविल पार्टनर्स मीन्स इन इंडिया हम उसको लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, बट इन यूके दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वो साथ में रहते हैं, सो दे आर अ सिविल पार्टनर्स। अगर सिविल पार्टनर्स में से किसी एक की इनकम इज नॉट सो मच, बट किसी एक की इनकम इज सो मच, तो वो अपना अनयूटिलाइज पर्सनल अलाउंस उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। या मैम कितना करेंगे, मैम पूरा कर देते नो 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 नो। तो गवर्नमेंट ने बोला आप अगर ऐसे करोगे तो व्हाट विल गवर्नमेंट अर्न विथ यू ऑल, है ना, गवर्नमेंट की भी तो ट्रेजरीज में कुछ होना चाहिए। सो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्ट करा है कि नॉट मोर देन 1260 यू कैन ट्रांसफर, मतलब आप 1260 पाउंड्स ऑफ योर पर्सनल अलाउंसेस अपने स्पाउस को या अपने सिविल पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट यू गाइज नो दैट, ओके। देन सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस का। सो गाइज व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? आपको पता है दैट अगर मुझे किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग्स देखनी है कि ठीक है भाई इनकी इतनी दे हैव अर्न सो मच, बट वो कौन से कंट्री में टैक्स लगेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। कहीं ऐसा ना हो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल रिलेट इन इंडिया वाले कि अगर कोई फॉरेनर आए इंडिया में एंड उन्होंने IPL में प्ले करा, ओके नो मैटर हिज हूसोएवर, सो ही प्लेड इन इंडिया में से जो उनको इनकम मिल रहा है फॉर IPL, इज इट टैक्सड इन इंडिया और इन इंडिया कंट्री, इज इट टैक्सड इन इंडिया या उनके कंट्री में? स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू सो मच ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, बट कभी कभी कोई कोई इनकम पे दोनों भी जगह पे टैक्स लगता है, दोनों भी जगह पे टैक्स लगता है। बट एक कंसेप्ट आता है दैट इज DTAA, डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट अवॉइडेंस अग्रीमेंट बेसिकली। सो अगर आपने वो कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो आपको आपकी होम कंट्री में आपको उस पर क्रेडिट मिल जाएगा, मीन्स यू नीड नॉट पे टैक्सेस। अगर आपने पे करा है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। पर एक्चुअली कौन सी कंट्री में मुझे टैक्स पे करना है? वो कंट्री में टैक्स पे करना है जहाँ की मैं हूँ रेजिडेंट, जहाँ का मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस मैच होता है। सो व्हाट आर दोस गाइज? मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस एकदम सिंपल नहीं है कि हाँ भाई अरे रेजिडेंट, नो नो नो, मैनी टाइम्स देयर इज अ ग्लिच। सो मुझे प्रीवियस ईयर का भी रेजिडेंशियल स्टेटस, लाइक प्रीवियसली अगर आप रेजिडेंट हो, हाँ प्रीवियसली आप रेजिडेंट हो, प्रीवियसली आप नॉन रेजिडेंट हो, इफ़ यू आर प्रीवियसली रेजिडेंट एंड करंट ईयर में आपने ना लाइक इन द करंट ईयर जस्ट 16 डेज के लिए आप वो कंट्री में थे, ओनली 16 डेज, तो आप रेजिडेंट नहीं हो, नहीं। अगर 16 to 45 डेज के लिए मैं वही कंट्री में हूँ जहाँ पे मैं इन द प्रीवियस ईयर रेजिडेंट थी, दैट आई हैव टू सेटिस्फाई 4 यूके टाइज। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज 4 यूके टाइज? अगर आपको याद होगा in the day 2 on the PPTs I have explained in the computation of income tax। कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए मेरे पास लाइक 5 टाइज है। सो व्हाट आर दिस 5 टाइज गाइज? डू यू रिमेंबर? या आई थिंक यू शुड रिमेंबर बाबा। स्टूडेंट्स मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा उनके थोड़े क्राइटेरियाज। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया? द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज कि आपका कोई फैमिली है, द मीन्स if I want to check कि मेरा UK में मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस है कि नहीं, so I'll check अच्छा whether I am having my husband, my wife, my children in UK, means whether am I having a family in UK, yeah if it is there तो ठीक है आप रेजिडेंट हो। further are you having a house in UK, मतलब आपके पास एक ही हाउस है, that shows कि आप रेजिडेंट वहीं के हो। अगर आपके पास हाउस भी वहीं पे है तो दैट इज व्हाट यू आर अ रेजिडेंट। क्या आप सब्सटेंसिव वर्क वहीं पे करते हो, means substantial जब maximum work है, are you doing there only, means are your work there only from there, yeah if you are there in UK for more than 90 days, अगर previous 2 years में अगर आप 90 days से ज़्यादा UK में रह गए हो ना तो भी आप UK के रेजिडेंट हो। Your or else I can see that if you are spending सबसे ज़्यादा टाइम in UK then in other country, means आप सबसे ज़्यादा UK में ही रहते हो तो वो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा।
सो दिस आर सम टेस्ट, अगर हमें नहीं क्लियरली पता होता तो टेस्ट के साथ हमें टाइज समझ में आ जाती है. So yeah, so all these things and then you become automatically resident and non-resident. That's all. ये आप है ना खुद ऐसे रीड करके भी समझ सकते हो. Cool. Child benefit income tax charges. Yeah, we know that. This is a benefit which government gives to an individual. जिनकी सैलरी कम है ज़्यादा ऐसा नहीं. They give एक benefits दे देते हैं. बट उसके बाद वो एनालाइज करते हैं, अच्छा एक इंडिविजुअल की सैलरी और उनकी इनकम अगर ये लिमिट से ज़्यादा है, वो लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? पाउंड 50,000. अगर किसी इंडिविजुअल की अर्निंग्स इज मोर देन पाउंड 50,000 तो उनको अपने चाइल्ड के बेनिफिट्स पे कुछ तो भी टैक्स भी पे करना पड़ेगा. बट अगर मैम हमारी 50,000 से कम है तो चलेगा, नीड नॉट पे, दैट्स ऑल. तो उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट फॉर एग्जाम्पल मैम हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम इज 50 और 60 के बीच, तो फाइंड आउट द डिफरेंस एंड गेट द परसेंटेज. वो परसेंटेज पे टैक्स चार्ज करना पड़ेगा. बट इफ इट इज़ मोर देन 60 पूरा टैक्सेबल, क्योंकि गवर्नमेंट तो बेनिफिट्स दे देंगे चाइल्ड्स के लिए, बट देन गवर्नमेंट भी फाइंड करेगी, अच्छा गवर्नमेंट जो मनी आपको दिया है, जो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट्स दिया है, क्या आप सच में वो बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल हो? अगर आप हो बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल तो ठीक है आप ले लो, पर अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ गवर्नमेंट को उनके हक का भी तो टैक्स पे करो. सो दैट इज़ द मोटो बिहाइंड दैट. ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो हमें पता है. स्टूडेंट्स, बहुत टाइम जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आती है ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर ना हमें कार भी बहुत देते हैं. कार के बेनिफिट्स लाइक ओ दे कैन गिव अस सम माइलेज एक्सपेंसेस, कुछ मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स तो होते हैं ना उसमें कार के लिए. सो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए. स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दिस CO2 emission वाला सिचुएशन एंड द 55 ग्राम्स पर किलोमीटर, प्लीज चेक दिस वॉज अमेंडेड. सो इसका क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स अमेंडेड था. ओके, दैट इज 55 ग्राम्स एग्जैक्टली अगर हो रहा है ना स्मोक एमिट या एमिशन पेट्रोल एंड डीजल कार में, तो आपको 16% तक उस लेवल चेक करना पड़ेगा. ओके, सो नीड नॉट वरी. ये क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इज बीन प्री रिटर्न इन योर पेपर. आपको ये सब दिया रहेगा. So again, you are not supposed to learn all these things. So that is the most beneficial thing you already have. Yeah. Just will take a break of like 2 minutes because I want to have a medicine because मैं कब से sneeze को रोक रही हूँ. Yeah, thank you. Just give me 2 minutes.
I hope we are live back. So yeah, I was sneezing a lot. So I had my medicine. Now I'm okay, okay-ish. Okay. Yeah, so we can just go ahead. Give me a minute. Yeah. So yeah, fine. Let us read further. After understanding the car benefits, okay, yeah, we know that if it is an electric range car or something like that, so there also certain percentage are returned based on what the mileages or the miles, how much it has been worked. Okay, so yeah, that it is. Students, this is also one common adjustment which comes in the paper. कार फ्यूल बेनिफिट, ये भी मुझे बहुत बार ना देखने मिला है कि हमें कार फ्यूल बेनिफिट मिला है, तो एक नॉर्मल स्लैब है, बस यही इसी को कंसिडर करना है. सो दैट नॉर्मल अमाउंट क्या है 25,300. इसमें मुझे कुछ बेस चेक नहीं करना है. इट्स 25,300 का 25,300 ओनली. ओके, फिर इसको फिगर आउट करना है. कूल. फिर गाइस कंपनी वैन बेनिफिट्स, कंपनी वैन बेनिफिट्स देख के क्या याद आता है? यस, कंपनी वैन एंड कार सेम नहीं होती है. आपको याद है जब हमने इन द प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन किया था? यस AIA मैम. हाँ, अलावेंसेस. सो यस, जब हम कैपिटल अलावेंसेस चेक करते हैं लाइक फॉर द डेप्रिशिएशन, तो वैन्स पे मुझे 100% AIA मिलता है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस. बट यही चीज़ मुझे कार में नहीं मिलती है, बिकॉज कार इज़ नॉट ए वैन, एंड वैन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है, बहुत सारे पीपल बैठते हैं, तो उसका डिप्रिशिएशन रेट इज़ मोर. सो वैन पे वी गेट 100% अलावेंसेस. एंड अगर मैंने कुछ न्यू परचेज किया, न्यू वैन, आई गेट अ सुपर डिडक्शन. मुझे सुपर डिडक्शन भी मिलता है. सर कितना मैम, कितना? 130%. सो ये आई होप कि आपको इस चीज़ का आइडिया है, राइट? आपको इस बात का आइडिया है. ओके, चलो वी कैन गो फर्दर. एंड फ्यूल का बेनिफिट्स एंड ऑल इज देयर. ओह स्टूडेंट्स, ये भी बहुत कॉमन है. स्टूडेंट्स, मुझे अगर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में मैंने अगर कहीं पे सेविंग्स करवाया है, सो व्हाट इज़ माई एनुअल इन्वेस्टमेंट? स्टूडेंट्स, माई एनुअल इन्वेस्टमेंट इज 20,000 पाउंड्स. 20,000 पाउंड्स, ठीक है, याद रखना. पेंशन स्कीम बेनिफिट्स इज ऑल्सो गिवन विद सम लिमिट्स एंड ऑल. अप्रूव्ड माइलेज कार, ये भी हमने क्वेश्चन किया था. अप टू 10,000 माइल्स है तो यू गेट 45 पेंस का अलाउंसेस. अगर आपको ज़्यादा मिला है आपका मुंह देख के, इफ दे हैव गिवन यू मोर देन इट इज कूल, but allowed is only this much. It's itna hi allowed. Okay, and goes on. Students, same here with the capital allowances also. Rate of allowances is this. जब हम depreciation type बात करें ना स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली माई प्लांट एंड मशीनरी एंड माई बिल्डिंग दोनों भी अलग है. एंड हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि अच्छा कौन सी चीज़ प्लांट एंड बिल्डिंग में ऐड होती है, कौन सी चीज़ प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होती है, एंड कौन सी इज़ द आइटम और द एक्सपेंडिचर विच इज़ टू बी एडेड इन बिल्डिंग. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोगों को उसको WDA फाइंड करना पड़ता है, बेसिकली दैट वेटेड वैल्यू एट द एंड. सो देर आर बेसिकली 2 pools. एक मेन पूल है, एक स्पेशल रेट पूल है, विच इज़ 18 and 66% इंडिविजुअली. So इसको भी you have to take care and accordingly we have to write इतना percentage goes on. You must be remembering. Annual investment allowances guys, मुझे 100% मिलता है. Super annuation, super deduction 130%. Special rate के लिए 50% for the first year. Straight line method. Cash base. Corporate tax, the most important thing. सब कभी कभी क्वेश्चन आता है गाइस, फाइंड द क्या कॉर्पोरेट टैक्स. वी नीड टू बी लकी. वाई? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. सो द परसेंटेज आर एज इट इज, सो इट विल बी 19 का 19 ओनली. बट वी नो अगर मुझे चेक करना है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी है, कौन सी कंपनी लार्ज कंपनी है, सो उसके लिए भी वी नो एक फॉर्मेट है, राइट? द लिमिट इज 15 lakhs. अगर किसी कंपनी के अगर मैं चेक करूँ किसी कंपनी का मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, लाइक मे बी इफ आई एम हैविंग मोर देन 51% स्टेक, तो हम 2 कंपनी हो गए. हम 2 कंपनी का इंडिविजुअली इफ यू चेक व्हाट इज द प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट इज मोर देन द लिमिट, इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज मोर देन द लिमिट, अलाउेबल लिमिट, तो वो लार्ज कंपनी बनती है. ओके, वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन फॉर दैट एंड वी हैड डिड ऑल्सो. वैट स्टूडेंट्स, अगर वैट आया ना क्वेश्चन में, आप ऐसा समझिए कि ये आपके लिए बोनस मार्क्स है, क्योंकि वैट का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल.
ओनली 20% लगेगा, ओनली 20, ओनली 20, ओनली 20% इज अ स्टैंडर्ड रेट. कूल. इज इट नॉट ईजी? या सुपर ईजी. कूल. इनहेरेंट टैक्स. इनहेरेंट टैक्स गाइज इट्स इंपॉर्टेंट. मीन्स अगर मुझे कुछ पहले से मिल रहा है इनहेरिट, तो कौन से अमाउंट पे मुझे पे करना है, क्या फुल्ली वो टैक्सेबल है? स्टूडेंट्स आपके पास डिडक्शन है 325 तक. इनिशियली आप डिडक्ट कर सकते हो नील रेट बैंड में, नील रेट बैंड में स्लैब्स दैट इज बैंड्स में 325. अगर रेजिडेंस नील रेट बैंड है तो इट्स 175. एंड दीज आर द लाइफ टाइम रेट्स. ओके, सो लाइफ टाइम रेट इज 20% टैक्स पे करना पड़ेगा एंड डेथ रेट इज 40 एंड इट गोज ऑन. कूल स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है. Students, this also becomes most important thing. Capital gain taxes guys, capital gain taxes. That is, अगर आपके पास कुछ capital gains है, you have sold something, other than house property, other than residential property, other than residential property, other than residential, तो 10 and 20 lower and higher rate. बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने सेल किया है एंड यू आर अ लो रेट टैक्स पेयर, तो आपको 18% टैक्स पे करना है, एंड हायर है तो फिर 28%. एंड दोज कॉमन एग्जेम्प्ट अमाउंट है, कॉमन एग्जेम्प्ट अमाउंट इज 12,300. या ओके, सो दिस आर सम डिस्पोजल गाइस. अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मतलब मैं लिटरली इसको मोस्ट कैलकुलेट करती हूँ क्योंकि यू कैन चेक दिस नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल द क्वेश्चंस. आपको NIC कैलकुलेट करने आएगा ही आएगा. आई एम प्रिटी श्योर. अगर एम्प्लॉई है तो क्लास 1, एम्प्लॉयर है तो क्लास 2, एंड क्लास 2 एंड क्लास 4 फॉर द बिजनेस सिचुएशंस. इट्स ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने कहीं पे टैक्सेस यू वर सपोज टू पे, आपको टैक्स पे करना था, अगर मैंने ज़्यादा पे कर दिया तो क्या होगा? आई कैन गेट द रिफंड, बट वो रिफंड के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि आपने ज़्यादा जमा करा है. या बट इन केस इफ़ यू हैव पेड लेस, देन तो आपको ओवर ड्यू, मतलब आपने कम पे किया है, सो यू हैव टू पे द अंडर पेमेंट, सो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो बेसिकली ना, वी आर हैविंग सम ऑफिशियल नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, बट अगर आपने कम पे किया है, लाइक यू हैव पेड लेस अंडर पेड, सो यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 3.25%. बट स्टूडेंट्स, अगर गलती से मैंने ज़्यादा पे किया, लाइक मे बी students, so you will not get so much of interest. It's just 0.5% interest you are going to get. That's all. Overpaid, so we get an interest of 0.5%. Cool. Yeah, now these are some standard errors. Like if I have deliberately and concealed, like I made myself, like I made janbujke, intentionally conceal or unintentionally conceal. So yeah, these are some maximum penalties, and because of my negligence or my carelessness, these are the penalties. Need not worry. And yes, here we are done with the tax rates. You know why I just want to show you all this is just because in the time of exams now, you need not suffer and you need not check on your own कि कितने टाइम लगेगा, how much. नहीं, एक बार हमने पूरा पढ़ा हुआ होता है ना, तो अगर क्वेश्चन आया ना तो हमें याद तुरंत आ जाता है कि अच्छा ऐसा तो मैंने कुछ देखा था. इट्स जस्ट दैन आपको फिगर्स याद नहीं रखनी है, बट आपको ये तो याद रखना है ना कि इसके अंदर दिया क्या क्या है, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल टुडे. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर. जो मैंने आपको बोला था कि न्यू स्पेसिमेन के लिए वी कैन स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट विद द पेपर. एंड इसका ना मैंने ऑलरेडी एक्सेल में प्रिपेयर करके रखा हुआ है, सो हम ना बार बार वो चेक नहीं करेंगे. लाइक मैं ना बार बार आपको शीट से नहीं बताऊंगी. बाय थिंग्स बिकम्स थोड़ा सा नॉट सो ईजी. कूल. So yeah, are you ready guys? Can we start for the day today? Yes, that is the first thing we're going to do. Section A and Section B of Tax UK Specimen FA 2022. That is my Finance Act 2022. I hope you guys are ready. Yeah. चलो. Let us start with the first question from Section A. So हमें पता है कि Section A में ना मैम टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड सारे के सारे होंगे MCQs. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड उसके सामने मार्क्स हमें मिलेंगे 2. सही मिला तो फुल 2 एंड इफ इट इज रॉन्ग फुल 0. कूल. चलो लेट अस स्टार्ट. कूल. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, William, Mr. William is a self-employed. Guys, when I talk about self-employed क्या होता है? Yes, students, self-employed means जो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर नहीं रहा है, मीन्स ही वाज सी हैविंग इट्स ओन
trading income? Yeah. He must be having his own business or profession, something like that. Cool. Along with that, the students एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर वो मतलब लाइक इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग सैलरी इनकम या वो कहीं पे जॉब नहीं कर रहा है, तो क्लास 1 एम्प्लॉय रिलेशनशिप विल नॉट कम. क्लास 1 एम्प्लॉय रिलेशनशिप वैसे भी नहीं होता है. सो दैट इज़ नाउ नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ. मे बी कुछ अदर क्लास मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है. Need not worry at all. Let's read it. Okay, William is a self-employed and his tax adjusted trading profit for the year is given 84,050. Cool. So by the end of the year, उन्होंने 84,050 is my tax profit they have told. Okay, taxable profit. That is my trading business profit. Okay. During the year ended, the William contributed 5,400 gross, guys, gross, into the national pension scheme. Okay, personal pension scheme. Need not worry, personal pension scheme में उन्होंने कुछ contribute किया. Let's figure it out. What have they asked us? What amount of class 4 NIC will be William paying in the current year? Class 4 NIC. Guys, याद है what is class 4 NIC? Yes, do you remember what was class 4 NIC का percentage? Yes, class 4 NIC is important. I'll show you the percentage. Yeah, this is class 1, class 2, class 3, class 4. Okay ma'am, so in between like 1 to 12 570 अगर उनका contribution है, so they need not pay anything. Ma'am, अगर more than that है, limited to 50 to 70, it's 10.25. Beyond that, it is 3.25. So okay, I'll take this consideration and I will write my answer accordingly. Okay. Okay, चलो, we are going to write the answer. So यहाँ पे ना I have like there are 4 options given in the question. ठीक है, A B C D. तो I have to first answer accordingly. So मेरे लिए क्या था, class 4 employees का 1 to it's 12,570. Limits. 12,570 से कितना लिमिट था स्टूडेंट्स? 50 to 70, right? And if it is more than 50 to 70, so students, what was the percentage of the taxes? There was 0%, 10.25%, and at the end it was 3.25%. Okay, so मुझे चेक करना पड़ेगा what is my earnings, guys. What is my earnings? Can you check out? Can you tell me? Yes, you're perfect. Your earnings are 84,050. 84,050. Yeah, if it is 84,050, I'll just write it over here. My earnings over here in the current year are 84,050. So अब मैं इसे mention कहाँ करूँगी? Where will I write? So what is my first slab? Ma'am, initially तो you all have to pay 0 for like initial 12,570, तो 0% pay करना है. Students, what is the difference between that? Ma'am, 50 to 70 minus 1250. इतने amount के लिए ना you have to pay 10.25%. If I multiply it with this percentage, am I getting 3864? Yeah, ma'am. अब what is the leftover situation, guys? 84,050 minus 5270. So this is further. अब इस पे ना मुझे 3.25% के हिसाब से टैक्सेस पे करना होगा. तो अगर मैं चेक करूँ कि मेरा टोटल कितना आएगा अमाउंट, it is coming 464962. Yeah, are you getting this about? Yeah, cool. Are you getting 4962.1? So what it is, this is the amount of tax जो मेरा जो self employed है ना person William has to pay to the government, right, in the name of NIC contribution. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, like nearest round off, तो मे बी 4962 or 4961 जो भी होगा क्वेश्चन. तो I have to hunt for the figure. Am I getting 5162? No ma'am, this. Yeah, I got this answer, 4962. So students, if we are doing so much, we get full 2 marks. Students, अब मुझे क्या मेहनत करना था? This तो was already given in the question, right? This was already printed in the question. Question means the thing जो आपको मिलने वाला है. सिर्फ आपको यही तो कैलकुलेट करना था. Don't you think this 2 marks are nothing other than the bonus marks for you all? है ना, इसमें तो आपने कुछ मेहनत ही नहीं किया, but still you are getting so good marks. So the first question was very easy, I feel. किसी को कोई भी confusion? Yeah, you can read it once and yeah, then we can start over for the second question. Yeah, just read it once.
सो या दिस इज माई सोल्यूशन, दैट इज बेसिकली 84,050 अगर आपकी इनकम. So on that we have to apply the rates, the slabs and the situations. Based on that the taxes are to be paid. अब taxes pay करने के बाद इतना we can go ahead to the second question. Student second question तो आप ऐसे ही आंसर कर पाओगे. It is very simple. Very means very simple. Okay. You are a training certified chartered accountant. Okay, so you are basically a accountant, and your firm chartered accountant, and your firm has a client who has. Oh, so basically your client, you are having a firm and your client has refused to disclose a chargeable gain. क्या वो ऐसे कर सकते हैं? क्या वो रिफ्यूज कर सकते हैं? नो नो, आई डोंट वांट टू शो, आई डोंट वांट टू शो, आई डोंट वांट टू शो. स्टूडेंट्स काफ़ी सारी बार ना क्लाइंट्स डू लाइक दैट. क्लाइंट्स को लगेगा कि ओके इफ दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर ना तो उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करना आ सकता है. सो वो क्या करेंगे फॉर टैक्स अवॉइडेंस और जस्ट दे डोंट वांट टू शो अपने बुक्स में ना वो नहीं शो करना चाहते, इसके लिए वो जानबूझ के गलत फिगर्स दे देंगे. स्टूडेंट्स इफ इट इज सो, अब क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने मना किया है दे डोंट वांट टू शो द कैपिटल गेन्स, अब मैं उनको फोर्सफुली तो कर नहीं सकती, बट मेरे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कौन से 2 एक्शंस लेने पड़ेंगे. सो दे हैव टोल्ड from an ethical point of view which 2 of the following actions could be expected by your firm. Okay, so we have to think what do you think कि मुझे करना क्या चाहिए. Okay, so there are 4 options. आपको उसमें से कोई भी बेस्ट 2 options choose करना है. Okay, so I'll read on the 4. Okay, reporting under the money laundering regulations. अगर आपने कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की है विच योर हु माई क्लाइंट, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है. हाँ स्टूडेंट्स, करना पड़ सकता है. एडवाइजिंग योर क्लाइंट्स टू मेक द डिस्क्लोजर, सबसे पहले यही तो एडवाइस करना है कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, प्लीज करो, प्लीज करो. ऑब्वियसली इन्फॉर्मिंग HMRC फॉर द नॉन डिस्क्लोजर्स. नो नो नो, मुझे HMRC को हम नहीं इन्फॉर्म करते, अरे उन्होंने नहीं बताया. नो 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 नो, नॉट दैट वे. ओके, वार्निंग द क्लाइंट्स दैट योर फर्म विल बी रिपोर्टिंग द नॉन डिस्क्लोजर. ऐसे में वार्न नहीं करते, हम कभी वार्न नहीं करते हमारे क्लाइंट्स को. वी कैन नेवर वार्न, अरे इफ़ यू नॉट शोइंग आई विल. नो नो नो, इट्स बेटर. आप पता क्या करोगे, आपका जो ऑडिट रिपोर्ट होगा उसमें आप अपना डिस्क्लेमर दे दो दैट यू डिडंट गॉट द थिंग, और यू मे लाइक आप चेंज कर सकते हो अपना ऑडिट रिपोर्ट, बट आप ऐसे उनको वार्निंग नहीं दे सकते यार मैं बता दूंगी या मैं लिख दूंगी. नो 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 नो, दैट इज़ नॉट अलाउड. So basically as per my expectations A and B, like I have to choose 2 things. मुझे लगता है I can report it to money laundering, yeah I think so. और मैं अपने एडवाइस तो करूँगी ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट को कि प्लीज़ यू हैव टू रिपोर्ट इट. सो या दिस आर द 2 options. I don't think option C and D are working well. So yeah students, by ticking 2 correct options आपको 2 marks मिल गए. नहीं लगता आपको बहुत ईजी है? I feel so. इसके लिए हमने पहले सेक्शन सी को कंप्लीट किया. आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन सी मुझे सेक्शन ए और बी बहुत ही ईजी लगता है, लिटरली ट्रस्ट मी. सेक्शन ए एंड बी सच में बहुत ईजी है. या वी कैन गो अहेड. या कैन वी रीड दिस क्वेश्चन. या सो भैया ना उन्होंने कुछ ऑप्शंस नहीं दिए, बट अगर आप क्वेश्चन में चेक करते हो ना तो शायद कभी कभी वो लोग ना ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट देते. सो यहाँ पे प्रिंटर नहीं हुआ है. ओके, नीड नॉट वरी. मार्टिन इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड. अच्छा, एक पर्सन की बात कर रहे हैं मार्टिन. she or he is a self-employed. Self-employed. What is the meaning of self-employed? हाँ मैम, मतलब है ना वो क्या करना चाहती है पता है, she is gonna or he is gonna trade, like he is going to do a trading business या maybe खुद का business, right? So they are not employed somewhere. And for the year ended on 5th April 2023, he's trading profit. His trading profit is 109,400. Okay. So I can write it over here. What is the trading profit? The trading profit of that company, of that Martin is how much? 109,400. Cool. So this is already given in the question. Further, during the year, Martin made a gift donation. Guys, अगर डोनेशन की बात आती है तो आपको याद आना चाहिए कुछ अमाउंट. चैरिटी डोनेशन 800. पता है हम ऐसे कहते थे व्हेन दे आर गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ डोनेशंस. अगर डोनेशंस अगर कुछ भी मिलता है ना एट द टाइम तो हम क्या कहते थे 800 है डिवाइड बाई 80%. या बट ये हम कब करेंगे स्टूडेंट्स? नेट है कि ग्रॉस है? स्टूडेंट्स, दिस फिगर इज ग्रॉस, दैट मीन्स इट इज़ 100%. इट्स नॉट 80. सो ठीक है, अगर ये ग्रॉस है मीन्स ये फुल है, देन यू आर नॉट सपोज टू डू वो 80%. अब आप नहीं करोगे.
So it is already given. Okay. What amount of, oh, my favorite question, personal allowances, my personal favorite question. Okay. What is personal allowances will be taxed, guys. It's super easy. Personal allowance तो हमें पता है ना कितना मिलता है. Yeah. If it is more, less than 1 lakh, yeah, so we can write. अच्छा, आपका profit है less than 1 lakh है. हाँ मैम इस पे तो नहीं है लेस देन 1 लाख, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ इट इज लेस देन 1 लाख ना फॉर श्योर 12,570 पूरा मिलता आपको. बट अभी ना इफ इट इज मोर देन 1 लाख तो यू हैव टू फाइंड आउट ANI, एडजस्टेड नेट इनकम, राइट? एडजस्टेड. सो उसमें से व्हाट आर वी गोइंग टू एडजस्ट, गाइस? वी नो द चैरिटी अमाउंट कैन आई रिड्यूस, या द डोनेशन वन. सो व्हाट आई विल डू इट नाउ फ्रॉम योर, I'll reduce my donation. Guys, what was the donation, guys? It was 800, right? So अगर मैं check करूँ दोनों का भी total, what am I getting? 800 reduced, guys. It is 10, 8, 600. Agreed? Yes or no? Everybody. So what it is, guys? What it is for me, students? अब ये मेरा है ANI, right? So now I have to check with the base income. So this becomes my ANI, correct? Now I have to check with the base income. सो मेरी बेस क्या था इनकम का? अच्छा, इफ़ इट इज़ मोर देन 1 लाख, या सो 1 लाख. सो आई चेक द डिफरेंस. सो इसका डिफरेंस आता है 8600. स्टूडेंट्स, दिस इज माई डिफरेंस. अब इस डिफरेंस का क्या करना है? पूरा का पूरा डिसअलाउड? नो मैम, इसका ओनली 50% इज डिसअलाउड, एज पर्सनल अलाउंसेस. आई होप आपको समझ में आ गया. सो व्हाट इज 50%? ऑब्वियसली मैम इसका डिवाइड बाय 50. इज इट 4300? ओ या, इट्स परसेंटेज, राइट? सो 4300 स्टूडेंट्स इज कम्प्लीटली डिसअलाउड. इट्स डिसअलाउड. अब डिसअलाउड है तो मेरा पर्सनल अलाउंसेस क्या है? इफ यू चेक ना, मैं पर्सनल अलाउंसेस का लिमिट है, my personal allowances are 12,570, but how much is disallowed, ma'am? 4,300. So can you tell me how much will be allowed? Yeah, it's just 8,270. Now over here ना कहीं पे भी आंसर नहीं दिया है, और एल्स अगर दिया होता तो फिर आपको मिल जाता है, यही होता है आंसर 8,270. So we can write it over here. My personal allowance which is allowed is 8,270. I hope the things are clear. Yeah, we'll read once again. Okay, so हमें ना ये वाला एडजस्टमेंट ना काफ़ी सारे बार बड़े बड़े क्वेश्चंस में करते हैं इन बिल्ट. लाइक लास्ट में ना व्हेन वी कैलकुलेट द इनकम टैक्सेस, ये हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है गाइस. ये हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है, ये हम करते ही है पर्सनल अलाउंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता ही है, राइट? सो ओके, वी कैन रीड अगेन. सो ट्रेडिंग प्रॉफिट इज 109,400. स्टूडेंट्स, ये वर्ड है ना याद रखना, क्या ये ग्रॉस है या वो नेट है? अगर ग्रॉस है ना तो एज इट इज़ कॉपी करना, बट स्टूडेंट्स अगर वो नेट है ना तो प्लीज़ आप उसको डिवाइड बाई 80% करना पक्का. इफ इट इज़ ग्रॉस देन इट्स ओके. कूल. सो आपने कैसे कैलकुलेट किया ट्रेडिंग प्रॉफिट? आई एम सो सॉरी. माइनस द डोनेशन, तो मुझे एडजस्टेड नेट इनकम मिला. एडजस्टेड नेट इनकम इज टू बी कंपेयर्ड वो 1 लाख वाली बेस इनकम से, एंड दैट जो भी डिफरेंस है उसका 50% डिसअलाउड है, तो जो डिफरेंस है वो अलाउड है. दैट्स ऑल. ओके, सो वी गॉट 8,270. I'm super sorry guys, I'm super sorry, I just cannot help myself also इसमें तो. Yeah, give me a minute.
Yeah, I am super sorry for the sneezes, but I am unable to like carry forward all this thing. But I hope you guys understand यार. हाय मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से ना फिर हेडेक हो जाता है स्टार्ट. चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड. So ठीक है, we have completed 3 questions. Let's go ahead with the 4th question. For the year ended on 31st March 2023, Hello Limited was making a trading loss. Hello Limited. So yeah, there is another company. There is another company. Hello Limited was trading loss. उसके पास ना trading losses थे. Let's see what happened. Guys, जब हम loss की बात करते हैं तो एक concept हमें याद आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कंपनी है which is having some other company के साथ tie up या 51% से ज़्यादा, तो अगर वो अदर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मे बी शायद वो हमारे लॉसेस को भी रीएम्बर्स कर सकती है. एज सच वो उनके प्रॉफिट से हमारे लॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट. ओके, सो या हेलो लिमिटेड हैज़ ओन्ड 100% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ शेलो लिमिटेड. ओके, हेलो के पास ओनरशिप है ऑफ 100% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ शेलो लिमिटेड since it begins trading on which date? Okay, 1st July 22. Students, कभी कभी ना dates becomes very important. Dates are very important because ये loss कब हुआ है students? उनका loss तो 31st March तक हुआ है, but Hello Limited has taken over 100% when 1st July 22. Okay, so July. So if you check on July, August, September, October, November, December, Jan, but ma'am only for 9 months. Yes, not for 10 months, only for 9 months. So for the year ended on 30 June, okay, that is okay. जुलाई से जून, हमको तो सिर्फ 31st मार्च तक चाहिए. Okay, for the year ended on 30 June 2023, like for the whole 12 months, शेलो कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स थे, बट मुझे इतने प्रॉफिट से मतलब नहीं है. मुझे कितना चाहिए प्रॉफिट्स? स्टूडेंट्स, आई एम ओनली कंसर्न विद देयर 9 मंथ का सिचुएशन, है ना. मुझे तो उनके खाली 9 मंथ्स के प्रॉफिट से मतलब है फिलहाल तो, क्योंकि उनके लाइक फुल 12 मंथ्स के प्रॉफिट्स हुए, बट हमें तो पता है कि हमें कौन सा चेक करना है, 9 मंथ्स का सिचुएशन. सो लेट्स चेक कि उनके 9 मंथ्स का प्रॉफिट एंड उनके जो 12 मंथ्स का लॉस है, उनके भी खाली 9 मंथ्स के लॉस को हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं. नीदर द कंपनी हैज एनी अदर टैक्सेबल प्रॉफिट नॉर ऑल लॉसेस. कूल. What is the maximum amount of group relief guys, it's group relief which शेलो कंपनी कैन क्लेम फ्रॉम हेलो उसके लॉसेस के लिए. स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक बहुत ईजी है? हाँ मैम, बहुत ईजी है. वी कैन चेक अबाउट ओवर हेलो कंपनी का क्या सिचुएशन है. इफ यू चेक ना फॉर हेलो कंपनी दे आर हैविंग लॉसेस ऑफ 1,80,000. कूल. बट शेलो कंपनी इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000. अब ये तो क्या हो गया बात, दिस इज लाइक फॉर 12 मंथ्स, दिस इज ऑल्सो लाइक फॉर 12 मंथ्स, बट हम एडजस्ट कौन से मंथ से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ओनली फ्रॉम 1st July 22 onwards, that too only for 9 months. So yeah, let's multiply it by 9 by 12 goes on over here also. So आप मुझे बताओ कि मैं कितना चेक करूँ. Yeah, please tell me, should I reimburse 180 or 135? How much can we adjust guys? It's clearly visible whichever is lower. आप उतना reimburse कर सकते हो, means आप उतना settle कर सकते हो, उतना you can take a group relief. So what it is it 180? No ma'am, it's not 180 guys. आप चेक करो, whatever you get the answers to. मैंने आपको बोला था कि आपको जो लगेगा ना आंसर, वो भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर में दिया होगा, बट वो आंसर नहीं होगा. या सो दोनों भी ऑप्शंस आपको लगेंगे, वो मिलेंगे ही आपको आंसर में. ऐसा नहीं होगा क्लियरली एविडेंट कि ये है तो यही है. नो. So 180 or 135. So I feel 180 is not a better option. 135 will be better. So yeah, we can adjust this much. Clear? Easy. So 4th question भी काफ़ी easy था, उसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था. Let's go ahead with the 5th question. Okay, जब हम 5th question पढ़ेंगे ना, ये भी हमने ऑलरेडी एक पेपर में किया है. ये क्वेश्चन मे बी दिसंबर या September 22 के क्वेश्चन में ये था. याद करो मुझे आंसर देना. या फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 22, Sizable Limited has a taxable profit. Taxable total profit of 820. Taxable total profit. What is that guys? उनके total profits कितने थे Sizable Limited के? 820. बट कौन सा डेट स्टूडेंट्स? 31st March 22. ओके, सो बिफोर ईयर 31st March 22 में उनका टोटल प्रॉफिट्स थे 820. In the current year, for the year ended on 31st March 23,
दे हैव इंक्रीज्ड द प्रॉफिट एंड उनका प्रॉफिट है 9,70,000. ओके मैम, ये तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ गया. सो प्रीवियस ईयर इट वॉज 820, नाउ इट इज 970. कूल. द प्रॉफिट्स आर इवनली अकर्ड. अच्छा, पूरे साल में ना उसको जस्ट वी कैन डिवाइडेड बाय 12 इफ यू वांट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर. Sizable Limited has had 151% ग्रुप कंपनी. अच्छा, 51% ग्रुप कंपनी पड़ा है यहाँ पे. दैट मीन्स क्या स्टूडेंट्स, क्या 51% ग्रुप कंपनी मीन्स सोचो. यस, ये शायद लार्ज कैपिटल की बात करना चाहते हैं, लार्ज कंपनीज की बात करना चाहते हैं. पॉसिबल है ना? हाँ, एक कंपनी में आपकी कंपनी है बट आपने कहीं पे 51% भी किया है ना, तो मे बी अब आप लार्ज कंपनी हो, यू आर नॉट द स्मॉल कंपनी. अगर लार्ज कंपनी हो तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस याद आने चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे हम उसको लार्ज कंपनी बोल सकते हैं. यू रिमेम्बरिंग मैम, लार्ज कंपनी बनने के लिए ना एक लिमिट आती है. हाँ, अगर वो कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स, दैट इज अगुमेंटेड प्रॉफिट्स आर मोर देन 15 lakhs pound, और अगर किसी कंपनी का उससे भी ज़्यादा है ना, देन इट इज़ अ लार्ज कंपनी. बट वो लार्ज कंपनी के लिए आपको कहीं ना कहीं तो 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो ओवर हियर देयर आर 2 पार्टनर्स, या दैट इज साइजेबल एंड अनदर, जहाँ पे उन्होंने 51% से ज़्यादा किया है. सो नाउ आई हैव टू बाइफरकेट. अच्छा, 15 lakhs डिवाइडेड इट बाई 2. सो अगर इंडिविजुअल कंपनी का प्रॉफिट्स आर मोर देन दैट लिमिट तो वो लार्ज कंपनी है. स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी लार्ज कंपनी होती है तो उनको टैक्सेस का पे करना पड़ता है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर सपोज आई एम अ वेरी लार्ज कंपनी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टैक्सेस पे करने की. ऐसा नहीं कि एक ही बार चलो ईयर ख़त्म हुआ, एट द एंड ऑफ लाइक सम मंथ्स मैं टैक्सेस पे कर दूंगी. ऐसा होता नहीं है. कब? कॉर्पोरेट टैक्स में. फॉरवर्ड फॉर द लार्ज कंपनी. लार्ज कंपनीज के लिए उन लोगों को मिनिमम 4 times, that is basically 4 quarterly, they have to make an installment. है ना, याद है ना? लार्ज कंपनीज डोंट पे लाइक वंस, एक ही बार में टैक्स नहीं पे करते, उनको 4 times इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है. चलो, तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. ओके, प्रीवियस ईयर उन्होंने दिया है, करंट ईयर में उन्होंने प्रॉफिट्स दिए. कूल. एंड 51% से ज़्यादा है. How will Sizable Limited pay its corporation tax liability, CTL, guys, corporation tax liability for the year ended on the current. Okay, so they have given like answers. Okay, let's see what is the correct answer. Before reading anything, we know current year ka profits are 970. Cool. So I'll just write it over here. Okay, guys, it's super easy. It's superb easy, huh? I too feel very easy. So what is large company going to pay? So when I talk about large company क्या करते हैं? So yeah, I know there are actually limits, right? So what could be the limits, guys? What could be the limits? अगर किसी कंपनी का, if any individual company is having profits which is more than the limits, yeah, so then it is a large company. So guys, what is the limit first of all? Yeah, that is important, right? So what are the limits basically? When I talk about limits, limit is equal to 15 lakhs. Cool? Yeah. Pounds. If there are 2 partners, यहाँ पे कितने 2 members है, isn't it? The company is having like 2 members and the company के profits कितने हैं? 970. Cool. So I'll just write how many members are there. Yeah, cool students. They are having basically this profit and 2 members. If there are 2 members, I have to divide it between individual members. So it's like 15 lakhs. Divided it by 2. Am I getting 750? Yeah. अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स इंडिविजुअल प्रॉफिट से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं? 750 होने चाहिए थे. 750 होने चाहिए थे, बट ये कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? इट्स 970. दैट इज ग्रेटर देन 750. दैट मीन्स इट्स ए लार्ज कंपनी. स्टूडेंट्स, अगर ये लार्ज कंपनी बनती है, अगर ये लार्ज कंपनी है तो आपको टैक्सेस कितना पे करना पड़ेगा? If I talk about corporate tax, this is one of the favorite tax which I know. Profits are 970. 19 is the percentage of the tax, isn't it? So मुझे क्या करना है? सिर्फ multiply करना है मैं 19%. So students, 184,300 is a tax liability which the company has to pay. 184,300 ना tax liability है. But कब पे करना है students? 4 equal installment means divided it by 4.
So now my liability is gonna be this 46,075. That is also in 4 installments. We need to pay the corporate tax liability. I hope you guys are clear. So let's see. इतना मुझे तो सोल्यूशन करने से मिल तो गया, बट लेट्स सी क्वेश्चन में उन्होंने कौन सा टॉपिक दिया. आई एम गेटिंग 46,075. कूल. 46,075. अच्छा 9 इंस्टॉलमेंट्स. मैम 9 इंस्टॉलमेंट्स कभी आता ही नहीं है. 9 इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है मैम? 1 होता है, 4 होता है. व्हाट इज 9? नो नथिंग. 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 46,075. वन पेमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट्स. बाकी का बैलेंस नो मैम. दिस इज द करेक्ट आंसर. 4 installments 46,075. You can check 46,075, 46,075, 4 equal installments. That's all. Even the question number 5 was cool. Were you able to manage this? Yes. Easy था ना, इसमें कुछ था ही नहीं डिफिकल्ट. खत्म. सिंपल. चलो अब हम आगे पढ़ सकते हैं. आगे कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट बनता है. बहुत 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 ईजी है बट इंपॉर्टेंट भी बनता है. फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 December 22, लेटनेस एक कंपनी है हैज़ अ कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ 60,000. अच्छा एक कंपनी है ना जिसकी लायबिलिटी थी टू पे 60,000. ओके 60,000 पाउंड्स उनको पे करना था. बट क्या हुआ? डिड दे मेड अ पेमेंट? ओ दे डिडंट मेड द पेमेंट. गाइस ईयर एंडेड 31 December 22 को उनकी लायबिलिटी थी विच दे डिडंट इवन पे टिल 31 March 24. ओके एंड द कंपनी इज नॉट अ लार्ज कंपनी. हाउ मच इंटरेस्ट विल लेटनेस लिमिटेड हैव टू पे? स्टूडेंट्स इज इट अंडर पेमेंट और ओवर पेमेंट? स्टूडेंट्स उन्होंने पे ही नहीं किया. दे हैव मेड अंडर पेमेंट राइट. तो कितना इंटरेस्ट दे हैव टू चार्ज? So for that now, I तो got this only figures right. मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर्स में फिगर्स है. बट सबसे पहले डू यू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट? डू यू रिमेंबर? आई तो रिमेंबर. यू डोंट. डू यू रिमेंबर? स्टूडेंट्स फॉर दैट ना मुझे अपनी शीट चेक करनी पड़ेगी. वेदर एम आई गिवन एनीथिंग इन द क्वेश्चन yes or no? तो यू कैन चेक रेट्स ऑफ इंटरेस्ट गाइज. इफ यू हैव पेड अंडर पेमेंट मीन्स आपने कुछ टैक्सेस अगर कम पे किया ना स्टूडेंट्स, कुछ कम पे किया ना तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 3.25%. 3.25, 3.25, 3.25. So 3.25 you have to pay the taxes on. Okay students, 3.25. Yeah, just give me a minute. Yeah, so it's 3.25. Liability was 60,000. Cool. चलो we can start writing. कि मुझे पे कितना करना पड़ेगा. दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट. रेट ऑफ टैक्स अनपेड, टैक्स विच इज अनपेड. या टैक्स रेट विच इज अंडर पे, या पेमेंट करने का बाकी है. द क्वेश्चन ओनली इट इज गिवन 3.25%. या इजंट इट? 3.25%. कूल. स्टूडेंट्स कितना पे करना था आपको? 60,000. 60,000. या इज इट 60 पक्का? और मैम इतना तो कर दिया पर कितने मंथ्स के लिए? कितने मंथ्स के लिए मैम? मेरी लायबिलिटी आती है टू पे फ्रॉम विच डेट गाइस? यस इफ यू रिमेंबर ऑलवेज आई हैव टू पे फ्रॉम अक्टूबर. माई फर्स्ट लायबिलिटी स्टार्ट्स एट अक्टूबर. October, November, December, Jan, Feb, March. So ma'am 6 months you paid a late payment. Yeah, it's not for the whole year. It just starts from October. So 6 months ka interest I'll have to charge. Guys, how many months? 6 months. So I did write it over here. Into 6 divided by 12. Are you getting 975? Yeah. So this is what the answer is. Let's figure hunt for the fint. Oh ma'am, first 975. It's etc. Guys, I got the first answer. Is it easy? Is it manageable? Is it easy? Is it manageable? हो गया क्लियर? इसमें क्या हुआ है मैम? बहुत ईजी है. क्वेश्चन का रेट तो मैम समझ में आ गया. या इट्स जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी कब से स्टार्ट होती है. सो अक्टूबर से यू ऑल हैव टू मेक द पेमेंट्स. यस इजी. ओके अब हम जा सकते हैं आगे. या कैन आई गो टू क्वेश्चन नंबर 7? वाई नॉट, है ना? चलो
Let's do question number 7 also. On 26th November 2022, एलाइस एक कंपनी है, has sold an antique table. हाँ मैम आप कुछ सेल कर रहे हो या कुछ तो भी एसेट, मे बी कैपिटल गेन्स आ सकता है, शायद नॉट. एंड द एंटिक टेबल वॉज परचेज इन 3800. ओह मैम डायरेक्टली सेल. मैम आपने सेल कितने में किया है? मैम यू हैव सोल्ड इट फॉर लाइक, आपने सेल किया 8700 में, यू हैव मैम परचेज्ड इट फॉर, तो आपका गेन इतना बनता है. क्या सच में ऐसे ही करना होगा मुझे? इज दिस माई गेन? इज 4900 पे गेन? स्टूडेंट्स अगर पता है 4900 आप डायरेक्ट गेन करोगे ना, आपके पास आंसर है 4900. इज इट सीरियसली सो? हो गया करेक्ट मैम, इजी. पता है ना आपको एक चीज कि मुझे 6000 का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा. या फॉर हाउ मेनी ईयर्स? टिल 1920. राइट 2 and 3 years. येस टोटल है 5 years. 17 18 19 20 21 या 22. 17 to 18 18 to 19 19 to 20 20 to 21. 5 years and 3 years. या एग्जैक्टली. सो आपका सेलिंग प्राइस होगा 8700, आपका परचेज प्राइस बन जाएगा 6000. सो या स्टूडेंट्स दिस इज द डिफरेंस विच इज 2700. एंड बस स्टूडेंट्स मुझे उसी को करना है कैलकुलेट. आई होप आपको याद आ रहा है. या दिस इज फॉर लाइक 3 years and 5 years के लिए क्या बनता है? I can just have a cross multiplication over here. Yeah, which is nothing other than 5 into 2700 into divided it by 3. So it becomes 4500. Oh yeah, is it 4500? 4500 is more or 4900 is more? Ma'am 49. We have to take less. हम ऐसे ही गेन्स कैलकुलेट नहीं करते, वी हैव टू कंपेयर. सो वी गेट 4500 एज द आंसर, नॉट द 4900 guys. We don't get 4900, we need to write 4500. Agreed? Yeah. I hope आपको समझ में आ गया. Yes? Cool. We can read the next question. Yeah, let's read the 8th question. On 14th November 2022, yeah, the Johnny made a cash gift to a trust. Okay, so you all have gifted to a trust of 8 lakhs. Cool. After deducting all the available exemption, Johnny had paid the inherent taxes also arising, and Johnny has not made any other lifetime gifts. So yeah, it's easy.
Inherent taxes, inherent taxes. So what is the amount of the inherent tax, guys? Inherent tax कितना पे करना पड़ेगा, याद नहीं है ना मैम? या सो इनहेरेंट टैक्स का हमें चेक कर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स. इट्स सिंपल, इट्स वेरी इजी. या वी कैन चेक. आपको याद होना चाहिए हाँ कि व्हाट इज द रिलीफ टू गेट. या व्हेन आई टॉक अबाउट इनहेरेंट टैक्स स्टूडेंट्स, हमें कुछ तो बेनिफिट्स मिलता है. कितना एग्जेम्पशन मिलता है मैम? हमारी ना प्रॉफिट वो जो इनहेरेंट जो मैंने दिया है ना मैम, दैट इज 8 lakhs. बट इफ इट इज अ टैक्स रेट्स नील सिचुएशन गाइस, हमें बेनिफिट मिलता है 32,500 का. सो दैट इज एन एग्जेम्पशन जो हमें मिल रहा है. ओके तो मैम टैक्सेस कितना पे करना पड़ेगा? सो वी हैव टू चेक. या क्या ये ग्रॉस है, क्या ये नेट है, राइट? तो जो अमाउंट मिला क्या वो ग्रॉस है, क्या वो नेट है? सो टोटल अमाउंट आई विल गेट वेदर दे हैव टोल्ड ग्रॉस या नेट. नहीं, तो फिर टैक्सेस इज 20%. ग्रॉस और नेट के हिसाब से मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट? सो इट्स ओके, वी कैन डू इट इजीली. चलो वी कैन स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर. इट्स 8 lakhs फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एग्जेम्पशंस. चलो अच्छी बात है. Okay, I'll write it at the side ways only. Okay, so my over here it's 8 lakhs. They have given 8 lakhs. Students exemption है 3,25,000 का. So I'm getting this amount of 475. Cool. Students ये 475 क्या है? Students that is 80%. It's after deduction 80%. So students, what is 20% tax over here? Question mark, I don't know. Can't we just do a reverse calculation multiplied by 20 divided by 80? It's 118,750. That's all. It's 118,750. क्या मुझे आंसर पता है? यहाँ पे लिखना है. ओके, वी कैन राइट 118,750. आई होप ये भी आपको पता ही है. ऑलरेडी यू गाइज नो दिस. या इट्स जस्ट दैट आपको इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है एंड आपको लिखना क्या है ना? इजी 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 इजी. कैन वी गो अहेड? या सो आपको पता है आपने आराम से अभी कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए एंड आई डोंट थिंक कि इसमें से लाइक कोई सा भी क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट. एवरीथिंग वाज मैनेजेबल, राइट? चलो वी कैन गो अहेड विद द 9th क्वेश्चन. इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 22-23 the Midred made, that is a person who has given some gifts. So Midred has made 4 cash gifts, guys. Cash gifts to her grandchildren. Cash gifts. अगर मैंने कैश गिफ्ट्स की बात की, आपको याद आना चाहिए कि कहाँ तक वो एग्जेम्प्ट है, कहाँ से वो टैक्सेबल है. यू रिमेंबर? यस यस यस. चलो लेट्स रीड. फॉर ईच ऑफ द गिफ्ट्स बिलो, click the below box and choose whether it is exempt or not exempt. Under what? Under the small gift exemption. Students, what is small gift? अगर मुझे बताओ ना small gifts क्या होता है? अगर we know the meaning, only small gifts are exempt. That means if I'm giving any gift of in the pounds, calculated in the pounds, which is less than 250 per जो person को मैं दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने किसी एक पर्सन को दिया 100, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई गेव देम 200, दैट इज ऑल्सो एन एग्रीगेट 300, तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है. सो इट शुड बी पर पर्सन. ओके, पर पर्सन इफ इट इज लेस देन 250 तो फिर वो एग्जेम्प्ट है. ओके, आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर द स्टेटमेंट दैट इज ओनली स्मॉल गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट. ओनली स्मॉल गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट. सो गाइस, व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट? एंड दैट टू only up to 250 pounds, guys. अगर 250 pounds अगर मैंने दिया है तो ही वो exempt है, otherwise that is taxable. What I did it, Mr. A, there is some options. 400 pounds. Okay, this lady basically Mildred has gifted 400 pounds to Alfred. Is this exempt? Oh no ma'am, it's not exempt. It's not exempt. Students, 340 pounds to Mini. More than 250. Ma'am, not exempt. Yeah. Ma'am, further 280 to Mini. Acha, already they have given 340 to Mini. Now for more 280. Ma'am, already not exempt. 175 to Winfred. Only that much. Is it less than 250? Yeah, obviously yes. So now this could be exempt. Got it. So this was easy. But again guys, you should remember the 250 वाला criteria. If you remember 250, then तो definitely you are very easy. अगर आपको 250 वाला याद हो तो आप आराम से ये चूज कर सकते हो ना, इज इट एग्जेम्प्ट और नॉट. अगर आपको नहीं पता है 250 वाला, तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ, है ना? इजी.
करें हम अभी 10th क्वेश्चन या? चलो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट इज वैट, क्योंकि मैं इंडिया में ना GST प्रैक्टिस करती हूँ. बिफोर दैट आई यूज टू प्रैक्टिस फॉर वैट एंड इनकम टैक्सेस टू. सो वैट वॉज समथिंग विच वॉज माई फेवरेट एंड जिसकी वजह से मुझे GST भी बहुत पसंद आता है. लेट्स फिगर इट आउट. For the quarter ended 31st March 2023, Jim has a standard rent. Oh, standard rated sales of 49,750 and then standard expense of 22,750. What is this, students? मतलब अच्छा आपने कहीं पे सेल किया है तो द सेल प्राइस ओवर ईयर स्टूड एट 49,750 एंड अगर आपने जो एक्सपेंस किया है सो दैट इज 22,750. वी नीड टू नो कि क्या ये फिगर्स में वैट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है. सो बोथ द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव, मतलब अभी तक इसमें वैट नहीं ऐड किया. सो या इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड ऑन द वैट, दैट्स ऑल. Zim uses a flat rate scheme. You know what is the rate scheme for VAT? मैंने आपको बोला था वैट के लिए देयर इज ओनली वन रेट, ओनली वन रेट, ओनली वन रेट, दैट इज 20%. या so they are going to consider a flat rate scheme, means only 20% with the relevant scheme percentage of a trade. So of a trade it's 12%, so 20% only they'll apply. Cool. The percentage reduction for the first year of the VAT registration is not available. ठीक है, not available है तो कोई नहीं, हम नहीं करेंगे और क्या. How much VAT will Zim have to pay to HMRC? Oh, first quarter end के लिए. So ठीक है 20%. Students कितना पे करते हैं? जितना सेल करते हैं उतना, राइट? What is my standard sales? My standard sales is 49,750. Cool. Let us write the answer. What is my standard sales? Students, rate is first of all 20%. That is something which we know, guys. Yeah, rate कितना है? Rate is 20% for VAT. Guys, what was my standard sale? My standard sale was 49,750. Cool. अब उसके ऊपर ये क्या है? इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? सर ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मीन्स में इंक्लूड नहीं है. सो दैट मीन्स इफ इट इज 100%, या तो वैट के साथ कितना होगा? वैट यू हैव टू ऐड 20%. सो 120% वी हैव टू फाइंड आउट इंक्लूडिंग वैट. बहुत ईजी है. वी कैन जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4970 इंटू 120 डिवाइड बाई 100. सो दिस इज माई टोटल वैल्यू ऑफ 59,700. क्या ये आंसर फाइंड करा था मैम? नहीं. वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि व्हाट विल दे हैव टू पे. अच्छा पे कितना करना है? दे वॉन्टेड टू पे अ परसेंटेज ऑफ अ ट्रेड ऑफ 12%. ठीक है 12% पे कर दो, दैट्स ऑल. मल्टीप्लाइड बाई 12%. आर वी गेटिंग 7164 7164 7164? Yeah, so we have to find that only. Oh ma'am, what is the answer? 597? No ma'am, no, there's no. Yeah, we got the answer 7164. Is it cool? Yeah, so we got the D option. That's correct. ठीक है, बहुत easy 7164 हमें मिल गया. easy था, है ना? easy था ना? क्या हम कर सकते हैं और आगे का क्वेश्चन? Okay, so by now we have completed 10 questions and सबके सब बहुत easy थे. Let's go ahead with 11th. Students, ये तो फ्री के मार्क्स से रहा है, आप लोग नहीं, आप इसमें मिस नहीं कर सकते. You have to achieve this. Which of the two assets will always be exempt from capital gain taxes? कौन से capital gains पे टैक्स नहीं लगता? जो भी आप खुद के लिए करते हो ना प्राइवेट यूज, उस पर टैक्स थोड़ी लगता है, वो थोड़ी कंपनी का है, राइट? और अगर आप कुछ गवर्नमेंट को पे कर रहे हो लाइक सम सिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली दैट आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट. बट फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसे दो एसेट्स हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता था एग्जेम्प्ट? इट इज़ अ कार सूटेबल फॉर प्राइवेट यूज़. या अगर आपने कोई कार लिया है तो उस पर प्राइवेट यूज़ के लिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा. प्लस चेटल पे मैम लगेगा, घर पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली लगेगा. बट यूके गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज गिल्ड में इन्वेस्ट किया है. स्टूडेंट्स, government securities are free risk for, like they don't have risk. Along with that guys, ये हमारे लिए ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस दे डोंट अप्लाई. सो डोंट यू थिंक कि ये भी आपके लिए फ्री मार्क्स थे, लाइक 2 marks just to get the things? I तो can feel, yeah, the most simplest thing we can do is section A and B, seriously, which you guys could have managed on your own also.
बट मैंने सोचा कि एक बार हम लोग चेक कर ही लेते ना एक पेपर का, लाइक कैसे होता है हमसे. ओके चलो, या वी कैन गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 12. यस, Winston has already invested 8,000 into cash savings account. याद आ रहा है कैश सेविंग अकाउंट गाइस. आपकी कैश सेविंग, इंडिविजुअल कैश सेविंग्स, ओके, इंडिविजुअल सेविंग्स का अकाउंट का लिमिट क्या था? यस, याद आ गया, 20,000 पाउंड्स. चेक करना प्लीज. सो आपकी लिमिट था 20,000 पाउंड्स, उसमें से 8,000 पाउंड्स यू हैव इन्वेस्टेड इट. लेट्स सी फर्दर. अब उन्होंने क्या बोला? During the year, still within that period only, the company wants to invest more. So what is the maximum possible amount that he can invest into the shares? Guys, limit कितनी थी? Guys, limit is 20,000, but out of 20,000 you have already invested 8,000. So 12,000 extra है ना, तो बस 12,000 ही आपका limit है. That's all. Is it not also the free marker answer? My maximum possibility now to further invest is 12,000 now. Now it's not 20,000. 20,000 में से 8,000 तो आपने कर लिया, बचा हुआ you can invest. That's all. Easy. चलो, बहुत फटाफट जा रहे हैं ना. हाँ, बट मैम जाना ही पड़ेगा ना. ओके 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 ओके, कैन आई गो अहेड? या, Ming is a self-employed. Okay, now this is important. This is important, not so much, but फिर भी अच्छा क्वेश्चन है. Ming is a self-employed. So there is a person who is self-employed, मतलब वो business कर रहे हैं अपना या फिर trading कर रहे हैं अपनी. For each of the type of the records listed below. So कौन से listed below है records? मैम business records, non-business records. ठीक है. Click in the boxes to indicate कि कौन से date तक उनको अपने records को maintain करने की ज़रूरत है. Year ends on, okay, self-assessment tax return on 2023. So 2023 है ना. So you know what, we need to maintain records for how many years, guys? Yeah, याद है? Yeah, we need to maintain our records for a period of 5 years. Yeah, for 5 years period. But कब से guys? कब से? After, this is important, after 31st Jan. But कौन सा students? After the following tax year. Yeah, after the following tax year. If you check this, 22-23 guys खत्म होता है 23-24 पे. 24 means 25, 26, 27, 20, 20. मैम 29 मतलब 31st Jan 29 तक. Yes, so both the records. Yeah, 31st Jan 25. No ma'am, no 25, it's 29. Wasn't it easy? Yeah, but आपको इस easiness के लिए आपको ये 5 years पता होना चाहिए था. Isn't it? Agree? Yeah. So 5 years अगर हमें पता है तो then तो ये question कुछ ज़्यादा ही easy था. Easy? Yeah, super. Can we go ahead? Students, सच में बोलूँ, these are your bonus markings which you cannot leave it. बहुत ही आसान है, बहुत ही easy है. Okay, we can go ahead. Yeah, let's read the 14th question. Oh, Moon Limited. Yeah. Hyper, literally moon. कल ही हमने देखा टीवी पे, यूट्यूब पे. Oh my God, Chandrayaan landed finally. Oh my God, so beautiful it was. Okay, guys. I don't know how will I complete the class also today. Like all my eyes are watery. But we have very less days for the examination, so my health should not affect our studies. Obviously it should not, right? Oh, chalo, we are going to study, we are going to work together. Chalo, Moon Limited has the following results. So what happened? This is the period. Okay, this is the period. What are the situation happening over here? Year ended as on 31st. I already took the medicine, but it is taking a lot of time to incalculate. Yeah, things happen. I'm so sorry guys. Yeah, year ended 31st December 2022. 31st December 22 को क्या हुआ? अच्छा, लॉस है 1,05,000 का. ओके, बट उसके पहले 4 months पीरियड एंडेड 31st December. कितने थे 4 months पीरियड? मतलब स्टूडेंट्स, मैम दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर.
So they're talking about September, October, November, December. Okay, so September, October, November, December का they were having profits of 43,000, but which year guys? 21. ये 22 की बात है, next year. Okay, so they were having some profits in the previous year के 4 months में 43,000 थे, and 8 months का profit. अच्छा, August तक 8 months का profit, 8 months. That is basically Jan, Feb, March, April, May, June, July. Oh, 8 months का profit, ma'am. They have given 96,000. The company does not have any other income. Okay, how much Moons Limited trading losses over year the current year can be relieved against the profit? ये check करना बहुत important है. Can be utilized against its total profit of 96,000 for the year ended. Okay, they are talking about only this, guys. Only talking about this. So चलो, let's see हम कैसे कर सकते हैं. Okay, अगर मैं ये चेक करूँ, क्या मुझे ये बता सकते हो कितने मंथ्स हो रहे हैं मैम? इट्स जस्ट इफ़ यू चेक, इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन 8 months, राइट? सो चलो, अगर 8 months है तो कितना हो सकता है अगर उनका पूरा साल का प्रॉफिट है फॉर द ईयर? सो आई कैन टेक इट फॉर 8 months. एम आई गेटिंग 64,000? या मैम, बट ओवर ईयर कितना था आपके पास प्रॉफिट्स? मैम इतना लॉस है एंड दिस मच इज प्रॉफिट, सो दिस मच इज द लॉस. 62,000 or 64,000, whichever is less, I can adjust that much only. I can adjust that much only. So if you check the answer, आपको 64 भी दिया होगा 62 भी होगा, but for us 62 is the perfect answer. Yeah, cool, clear, easy. Yes, खत्म. Now the last question for this section, and yeah, we are done with the section A also. ठीक है, चलो. Yeah, by 140 out. Cool. Nigel Limited. Nigel has not previously been a resident of UK. Oh, he was not a resident. He was not a resident. He was not a resident means उसकी कोई भी income will not be taxable in UK. That's cool. Only UK की particular income may be taxed. Being in the UK for less than 20 days. अच्छा हाँ मैम, if he has stayed for less than 45 days and something, तो he will not be a UK resident. Cool. But previously, not previously been recorded. So like maybe there would be like previous years he was not being a resident previously. Cool. For the year ended on the current, he has agreed with all the three. Acha, he has 3 ties in UK. 3 ties in UK means, students, he is having his family in UK. He is having his family in UK. He is having only one house property, and that too in UK. He is having a substantial work in UK. So means he is satisfying all the 3 knots. He is already satisfying the 3 nights. सी क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे गलती करोगे, पक्का है. मीन्स वो पहले साल में प्रीवियस ईयर में ही वॉज नॉट अ रेजिडेंट. तो मुझे क्वेश्चन देखना है, और ऑलरेडी वो नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद भी उसने 3 टाइज पूरी की. अब क्या करूँ स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज? ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर डेज है कि नाइगल कुड स्पेंड इन यूके विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट? मतलब कितने दिन तक अगर वो रहेगा ना यूके में ये साल भी, तो भी वो नॉन रेजिडेंट रहेगा. मैम इट्स अ रिवर्स क्वेश्चन यार. सो इन दैट विदाउट इवन आई कैन नॉट जंप आउट विदाउट दिस, बिकॉज मैं लर्न नहीं किया मैंने ये कुछ. इट्स जस्ट वी नो स्टूडेंट्स. रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट या प्रीवियसली रेजिडेंट. हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स? नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं थे. Along with that, स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया पता है? 3 टाइज भी सेटिस्फाई कर लिया. ओह, 3 टाइज सेटिस्फाई. रेजिडेंट, ही बिकम रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई 3 or more ties. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर वो 91 डेज से 120 डेज के बीच में रहे, 91 डेज से 120 के बीच में रहे, तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे. या मोर देन 120, मतलब 91 से कभी भी ज़्यादा रहेंगे ना, तो वो पक्का रेजिडेंट है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम डेज कि वो नॉन रेजिडेंट रह सकता है? मैम 90 डेज तक. दैट्स ऑल. आप एनालाइज करिए, आपको खुद को पता चल जाएगा. मतलब अगर उन्होंने 3 सेटिस्फाई किया है टाइज, एंड इफ ही स्टेइंग मोर देन 91 डेज, तो वो पक्का रेजिडेंट है. हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप कितने दिन रहोगे तो आप नॉन रेजिडेंट हो, भले आपके पास 3 सेटिस्फाइड है ये टाइज. सो इजंट इट सिंपल? हाँ मैम ठीक है. We can directly get 120, 180 to 95. Ma'am, it's 90 days only, right? Cool. You can read again the question. कितने maximum days he can spend so that he is not a resident? So it's 90 days. I hope आपको ये समझ में आ गया. Cool. So with this, you have completed section A. 30 marks achieved. Actually achieved. Okay. Can we go to section B?
करें स्टार्ट सेक्शन बी? या चलो वी कैन गो अहेड विद सेक्शन बी ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है ना सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ मैम, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं. बट कैसे? सेक्शन बी, व्हेन यू विल स्टडी सेक्शन बी स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में ना 3 केसेस आएंगे. देयर विल बी 3 केसेस, इंडिविजुअल केसेस. इंडिविजुअल केसेस के अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के. या डे 1 पे आई हैव एक्सप्लेन यू. इनिशियली जो 15 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के, वो सब अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. बट सेक्शन बी के 3 केसेस देंगे, 3 केस सिनेरियोस, एंड इन एवरी केस सिनेरियोस 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स. या दैट वी हैव टू डू. तो बेसिकली इन सेक्शन बी जो अब हम पढ़ेंगे उसमें हमें 3 केस सिनेरियोस पढ़ने होंगे. लेट्स सी फर्स्ट. Let's read the first case scenario. Yeah, students, this is my first case scenario. Wait, let me open it for y'all. Yeah, late term, maintain term. Let's read the first case scenario. Students, please इसमें बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे names है, आपको ध्यान रखना होगा. Okay, first Delor and Grant. Delor and Grant. So they are talking about the 2 people का name Delor and Grant. मैं आपको read करने के पहले ना एक story form बता देती हूँ because I have read it ना. So Delor is a father. Grant उनका baby है, मतलब उनका son है. He's not very small. He's a good मतलब son. But क्या हुआ, Delor ना कहीं भी work करता था, कहीं पे job करता था. Delor was a father. He was working somewhere. Okay. Delor जिस कंपनी में वर्क करता था ना, वो कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए. करेक्ट? तो मतलब डेलॉर ने बहुत पहले जब उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की होगी ना, तब उन्होंने कुछ शेयर्स परचेस किए थे. फिर जब डेलॉर ने छोड़ दिया वो कंपनी, तो उन्होंने अपने शेयर्स जो उन्होंने बहुत पहले परचेस किए थे, वो उन्होंने अपने सन को दे दिया एज अ गिफ्ट. उस दिन का तो फेयर वैल्यू अलग होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस. हाँ मैम. नाउ व्हाट हैपेंड, जो ये ग्रांट है ना, उनका बेबी, ही एक्चुअली सोल्ड. उनका जो किड है उन्होंने वो सेल कर दिया शेयर्स. अब किसके हाथ में प्रॉफिट आएगा? हु इज गोइंग टू हैव अ टैक्सेबल प्रॉफिट? हु इज गोइंग टू हैव अ कैपिटल गेन्स? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा हिंदी में. नाउ वी विल रीड इन द इंग्लिश. फटाफट वी विल समझ में आएगा ये क्वेश्चन. On 10th Jan 2023, on 10th Jan 23, on 10th Jan 23, guys इसमें dates बहुत important, ठीक है. डेलॉर मतलब फादर. डेलॉर हैज मेड अ गिफ्ट ऑफ 25,000 शेयर्स £1 ऑर्डिनरी शेयर्स इन डब लिमिटेड. मीन्स डेलॉर के पास ऑलरेडी 25,000 शेयर्स थे when he purchased what was £1, which company? Dub Limited, an unquoted trading company code, and he has gifted this to his son Grant. Okay. When Delor purchased, क्या प्राइस था? 25,000 into £1. वो ज़माने में परचेस किया था, ठीक है. The market value of the shares on the date was 240. Oh means क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने सेल किया अपने बेबी को, द ग्रैंड को, market value of the share was £240,000. Delor had subscribed these shares on 1st July 2011 in Dub Limited. अच्छा मैम, 2011 में they have purchased. 2011. Oh yeah, isn't it 2011? So way back. On that day, the price was what? The price was just 25,000 into £1. So it was just 25,000. Cool. Okay. Delor and Grant, what they thought, the father and the son, Delor and Grant have both elected to hold over the gains as a gift of the business asset. So they thought, okay, they'll make a sale and like whatever they'll understand, consider it as a gift in the business asset. Okay, let's forget what's further question. Grant sold. Acha, Grant sold. Now Delor has given the shares to his son, right? Grant. Now Grant is having the authority. And Grant ने क्या सेल कर दिया? Grant sold the 25,000 shares in Dub Limited on 18th March 23. Guys, 18th March. Father ने कब सेल किया है अपने बेबी को, सन को? Students, father have sold on 10th Jan. But Grant ने बेच दिया for 24 lakhs. Cool. Sorry, 24 lakhs. I'm so sorry. It's 240. 2,40,000. डब लिमिटेड, अच्छा जो कंपनी के शेयर्स है, डब लिमिटेड हैड द शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स £1. डेलोर वॉज द सेल्स डायरेक्टर. अच्छा, अब वो स्टोरी बता रहे हैं. डेलोर वो टाइम पे ना कंपनी का पर्सन था. डेलोर वॉज द सेल्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 1st July till the date when he transferred his shares to his son.
ग्रैंट हैज नेवर बीन एन एम्प्लॉय और द, अच्छा बट सन है ना, सन उस कंपनी का कुछ भी नहीं लगता था. मीन्स फादर वॉज अ डायरेक्टर देयर. ओके, व्हेन ही हैज परचेस्ड दैट शेयर्स एंड एट द एंड जब उसने अपना जॉब छोड़ा, सो ही ट्रांसफर्ड इट टू हिज सन. ओके, ये हुआ है, बट उनका जो सन था वो कंपनी में कुछ भी नहीं है. कूल. Okay, so this is a storyline. This is a storyline. Further, for the year ended on 22-23, Delor and Grant, father and son, both have. Oh, ये important है. This is important. A single line which gives hint. Delor and Grant are both high rate taxpayer. High rate taxpayer. That means what, students? इन पे जो tax की liability है ना, it's very high. That means is it 20% holder? No, ma'am. It's 40% वाले higher rate, slab वाले higher bands. Yeah. They have each made other disposals of the asset during the year, and therefore they have both utilized their exemptions. Okay, cool. No worries, no worries, no worries. Now, I'm not reading the second case scenario, which is there in the first only. Oh yeah. Let's read the first question what they have asked us. Calculate the capital gain taxes liability for the year ended on 20 to 23 in respect of disposal, sale of the shares in Dub Limited. Guys, जो सेल हुआ तो क्या प्रॉफिट हुआ है? या इट्स वेरी इजी, डोंट यू थिंक? हमने परचेस कितने में किया था? मैम वी हैव परचेस्ड ऑन विच डेट? गाइज यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आई हैव परचेस्ड इट ऑन 1st July 2011. 1/7/2011 I have purchased it. I have purchased the shares. Hey guys, what is the price of purchase that I have made it? I have purchased it for like 25,000 into £1. So this was my purchase price. But I sold on which date? Means the father 10/1/23. He sold it for what value? Is it 2 lakhs 40? Yeah, which was there in market. So what do you feel? What is the gains? Am I getting a gain of 215? Yeah, ma'am. Cool. Hey, is it given? What is the capital gain? Ma'am, it's not gains. It's gain. No, ma'am, it's taxes on that. Oh. Guys, when I'm talking about CGT, capital gain taxes, if you are a high rate taxpayer, if you are a higher rate taxpayer, you know what is your tax liability? Yeah, I think you know, obviously. Is it 20%? Yeah. Need not worry, I'll show you. It is 43,000. So am I getting the value? So you'll be telling, yeah ma'am, it's visible. Yeah, over here it's 43,000. Can I book that? Yeah. Should I show you that 40, like how did you got 20%? Wait a minute, I need to show you all. This is what happens. Yeah, students, if you are having a capital gains over your capital gains, lower rate, higher rate. If you are higher rate now, students, if you are higher rate taxpayers, then obviously it is going to be 20%, not 10. So yeah, did you got 20% on that? Yeah, that's all. Cool. Are we cool with this? Yeah. So we analyzed our answer also, and that was pretty cool. Chalo, we can go ahead with the second question, keeping this case scenario in the mind only. यही केस सिनेरियो को याद रखना, ठीक है? आगे का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. Which of the two following statements सही है? Which of the two following statements are true in relation to CGT implications if Delor, अच्छा Delor वो father instead of selling 25,000 shares in Dub Limited himself for 240, अगर उन्होंने खाली गिफ्ट दिया होता, oh, and then they would have gifted the cash proceeds, मतलब क्या होता पता है? Which of the two following statements true है? क्या किया पता है? If Delor had instead sold means पहले क्या Delor ने, फादर ने अपने बेबी को सेल करा, राइट? Delor has sold it to its son. Yeah. Means not sold, not in cash. Guys, Delor has gifted to his son and the son has made an outside sale. बट अगर वो गिफ्ट ही नहीं देते अपने सन को एंड वही खुद सेल करते तो गिफ्ट का कंसेप्ट विल हैव नॉट बीन केम, राइट? बिजनेस डिस्पोजल तो था ही, पर गिफ्ट का कंसेप्ट नहीं आता, राइट? विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू? विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहले
बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ वुड हैव बीन अवेलेबल. ओके मैम, बिजनेस एसेट का तो रिलीफ मिल सकता था अगर उन्होंने सेल करते तो. ठीक है मैम, दैट इज कूल, दिस इज समथिंग व्हिच वी नो ऑब्वियसली. हाँ ठीक है, मिलता है. ओके या देयर आर टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट अगेन. द सीजीटी लायबिलिटी वुड हैव बीन पेड लेटर. मैम लायबिलिटी कभी भी लेटर या तुरंत नहीं होती है. लायबिलिटी इज लायबिलिटी, यू ऑल हैव टू पे ऑन टाइम, सो दिस इज नॉट ट्रू. नो. द कैश गिफ्ट वुड हैव नॉट बीन चार्जेबल डिस्पोजल. ऑब्वियसली मैं अगर मैं गिफ्ट देती ही नहीं, अगर मैं उनको गिफ्ट देती ही नहीं मेरे सन को, तो गिफ्ट का तो बात ही नहीं आता, राइट. सो इट वुड हैव नॉट बीन चार्जेबल. अगेन द कैश गिफ्ट वुड हैव बीन क्वालिफाइड. नो क्वालिफाइड, इट्स जस्ट ट्रू. मीन्स वो आपको बिजनेस का डिस्पोजल मिलता, प्लस अगर आपने उनको सेल किया ही नहीं होता, लाइक यू वुड हैव नॉट गिफ्टेड, तो गिफ्ट के कॉन्सेप्ट आते ही नहीं. दैट्स ऑल. इजंट इट सो सिंपल यार, इट्स सो सिंपल है मैम, बहुत सिंपल है. आई तो फील इट वेरी सिंपल. होप टू यू कि आपको भी सिंपल लग रहा होगा, है ना. इजी है ना. चलो या वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में ना, ये व्हाट इज मॉडलॉन. ओके सो मैम सेकंड क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा. मीन्स ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर ही देयर इज अ सेकंड स्टोरी, मेलॉन एंड अल्वीता. ओके लेट्स रीड अहेड विद मेलॉन एंड अल्वीता. या लेट्स सी व्हाट हु इज मेलॉन एंड हु इज अल्वीता देयर. Okay, let's get started. Okay, so basically ना, अगर मैं आपको इसकी भी स्टोरी लाइन दे दूँ, मेलॉन एंड अल्वीता हस्बैंड वाइफ है. उसमें मेलॉन इज लाइक वर्किंग एंड ही इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी ऑल्सो एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो गुड. अब क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने ना एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया. अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई सेल करता है तो हमें पता है रेजिडेंशियल टैक्सेस लगता है ना, प्रॉपर्टी के टैक्सेस लगता है. अब बात आती है ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर जो कोई कमाता है, लाइक प्रॉपर्टी इनकम, इफ अगर दो पार्टीज ने, लाइक स्पाउस ने मिलके उसमें अर्न किया है तो दोनों की भी अर्निंग्स आएगी. बट अगर सब कुछ खर्चा अगर हस्बैंड ने किया एवरीथिंग, तो ही इज ओनली गोइंग टू गेट द इनकम्स ऑल्सो. उन्हीं को टैक्सेस भी भरना पड़ेगा. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मेरे पास ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है. व्हाट आई डिड, उसमें से ना लाइक मेरे पास पूरी की पूरी बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें लाइक 10 फ्लोर्स तो मैंने किसी को रेंट पे एंड ऑल दिया, तो दैट इज माई प्रॉपर्टी. बट इन वन फ्लोर आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस. तो क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हुई मेरे लिए? नो. अब वो हो जाएगी मेरे लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला टैक्सेस आर नॉट एप्लीकेबल. सो लेट अस रीड कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या. इट्स वेरी इजी. On 28th March 2023, okay, 28th March, they are talking about 28th March, Marlon sold a residential property for 497. Okay, कुछ सेल किया है 497 पे, which he was and he have owned individually. Means उसने खुद ने purchase किया था, he have owned it. The property was been purchased in 22 October 2007. मतलब काफ़ी पहले purchase किया था. So they have purchased the property for 152,600. They sold the property for 497,100. Okay. मैम जो भी डिफरेंस है वो तो टैक्स होगा. या सिंपल, या चलो कर दो, चलो मैम सिंपल कर दो. इज इट सो? लेट्स सी ना. मैम आपने सेल किया है 49,700, आपने परचेस किया था 152,600 में. या मैम दिस इज अ प्रॉफिट 34,400. या चलो हो गया, क्लियर मैम, खत्म. पक्का? नहीं मैम पढ़ना पड़ेगा ना क्वेश्चन. या लेट्स रीड. थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ओनरशिप, पूरा टाइम पे ओनरशिप में, द प्रॉपर्टी वाज ऑक्यूपाइड बाय मेलॉन द हस्बैंड एंड हिज वाइफ अल्वीता. ओके, सो बोथ ऑफ देम वर लिविंग एज द मेन रेजिडेंशियल. Oh students, this is important. One third of the property was always used for the business purpose by the couple. So students, only 2/3 of the property was being like a property for me, a residential property. 1/3 तो हम वर्क करते थे उस पर, तो मुझे देखना पड़ेगा अब 1/3 पे भी क्या मुझे लगाना है दैट कैपिटल गेन्स या नीड नॉट. चेक करता. बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ इज नॉट अवेलेबल. अच्छा, बिजनेस एसेट का डिस्पोजल नहीं मिलता उनको, रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल. ठीक है, कोई नहीं. For the year ended on 22-23, Merlin is a higher. Oh, अब आया बात मेन इंपॉर्टेंट. हस्बैंड इज अ हायर रेट टैक्स पेयर. कूल. सो उस पर हायर रेट के चार्जेस लगेंगे, अकॉर्डिंगली मुझे चेक करना पड़ेगा. बट अल्वीता डिड नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम. अल्वीता इज नॉट अर्निंग. अगर अल्वीता अर्न नहीं करती है तो उसको
अपने पर्सनल बेनिफिट्स भी थोड़ी ना मिलेगी, दैट इज पर्सनल अलाउंसेस. अगर आप अर्न करो तो मिलेगा, नथिंग देन नथिंग. ओके, दिस विल रिमेन द केस फॉर द 22-23. नीदर ऑफ देम हैव मेड एनी अदर डिस्पोजल. कूल. सो आई थिंक आपको क्वेश्चन की स्टोरी लाइन तो समझ में आ गई. या husband and wife are there, like 2 people. Husband is earning a good amount and he is paying the taxes also in the higher slab rate. Yeah, that's cool. And he is earning also because he is going to sell some property. ठीक है, उन्होंने अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करना है, उनको कहीं से तो इनकम भी आ रही है, सो वो हायर रेट टैक्स पेयर है. अलविता उनकी जो वाइफ है, शी इज़ नॉट पेइंग टैक्सेस बिकॉज शी इज़ नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स, तो वो नहीं पे करती है. अब लेट्स सी फर्दर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे. So yeah, if I check about the question, what is Merlon's chargeable gain for the current year? Oh ma'am, chargeable gain. Tax कितना पे करेगी? What is the gain? Students, ये important बनता है, पता है कैसे? आपको याद है सेल मैंने कितने में किया था? Students, we made a sale of one amount. हमने सेल किया 497 या परचेज हमने कितने में किया था स्टूडेंट्स? 150 to 600. वो क्वेश्चन था ना, 150 to 600. सो स्टूडेंट्स, इफ आई टेक द टोटल, अब ये बनता है मेरा प्रॉफिट पक्का या 34400. इज इट पक्का दिस मच? ना. क्यों? क्वेश्चन में तो दिया है मैम, हो गया करेक्ट. दिस क्लियर स्टूडेंट्स, वी नो. और only on the residential property I'm going to pay tax. Residential property. So what is the residential property? Only two-third. Only two-third residential property. So इसका अगर 1/3 करोगी तो that will be commercial property, right? This into 2/3. So that is this, and the difference between them will be basically 114,800. That is what students, it is known as for commercial property. अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, that is also important. What is Melon chargeable to taxes? So उसको चार्ज पे करना पड़ेगा 114,800. Agreed? Yes. 1/3 of the property. Yes. Need not worry. After this question, we'll take a break of 5 minutes because I know बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर. Need not worry. चलो over here. What is the amount of the CGT, my capital gain taxes, that would have been saved? ये important है. अगर Merlon has transferred the ownership before the Alvita, means क्या हुआ हमें पता है. Merlon already he is earning something, right? He is having an income. उसके ऊपर और उसको अगर प्रॉफिट्स आ रहा है तो उसका टैक्स तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, राइट? उसका टैक्स तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. अब क्या है, मेरे पास ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी है कि आई वॉन्ट टू सेव लाइक मर्लॉन का टैक्स, तो क्या मैं प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर कर सकती हूँ वाइफ पे ताकि शी पेज टैक्स? सो दिस इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. व्हाट इज द सेविंग्स दैट कैन बी डन? सो ये सेविंग्स के लिए ना आई एम ऑब्लाइज्ड टू शो यू ऑल दिस. ये मुझे आपको शो करना ही पड़ेगा. गाइस, आपको ये याद है कैपिटल गेन टैक्सेस, अगर आपकी लोअर इनकम है तो लोअर इनकम किसकी होगी स्टूडेंट्स? उनकी वाइफ की, अलविता. शी इज़ नॉट हैविंग एनी इनकम, तो मे बी उसका टैक्स लायबिलिटी 10% बनता है. बट स्टूडेंट्स, हमने तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें. या स्टूडेंट्स, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो शी इज़ लायबल फॉर पेइंग ओनली 18%. बट हमारे जो हस्बैंड थे वो पे करते थे 28% पे बिकॉज ही वॉज हायर रेट टैक्स पेयर. तो अगर पे मतलब वो हस्बैंड ने अगर वाइफ के नाम पे कर दिया तो डोंट यू थिंक यहाँ पे 10% का वो सेव कर पा रहे हैं? डोंट यू थिंक 10% का सेव कर पा रहे हैं यहाँ पे? या 18 का 28 गाइस, वो 10% सेव कर ले रहा है. सिर्फ इतना पक्का? मैम के कुछ और भी है स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली मुझे पता है दिस इज माई एग्जाम्शन वैल्यू, तो एग्जाम पे भी तो टैक्स देखना पड़ेगा. सो ओके, इट इज सिंपल, वी कैन डू इट. या आई कैन शो यू ऑल, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा. ओके चलो, लेट्स राइट इट ओवर हियर, क्योंकि 50% ही ओनरशिप है. So Merlon is the higher tax rate payer and Alvita is not a payer. So I can write it. Merlon is higher rate tax payer. So he is supposed to pay normally, on the normal basis, he is going to pay 28% on what guys? 28% on, yeah, sale of residential house property. But his wife Alvita, no taxpayer. No.
So for her now, my situation will be 18%. But now when you transfer, ma'am, it's a game. Matlab, now Melon can save. Don't you think Melon can save 10%? Yeah. So now students, Melon can save 10%. That is what the savings are. What they have asked us in the question is this only. But ma'am, they don't want the figure. They don't want the percentage. They want their actual amount. Yeah, let's read. Let's read further. Okay, how much is exempt, guys? For that also 28% you have to see. That 1 to 300. Yeah, I'll just write it over here. For like 1 to, yeah, for like 1 to 300, 28% was there. And for the remaining this amount, that is 50%, so 50,000 minus 1 to 300. So this is the remaining, and 10% we get the profit. So it is 7214. That's all, guys. It's 7214. I hope you understood this also. Easy. Yeah, students, easy. Yeah, chalo, very good. Let's go ahead with the last question for the day. Maybe this will be the last question for the part. Okay, chalo. What is the payment date for the capital gains payable on the disposal of the residential house property? कब सेल किया? 28 March 23. स्टूडेंट्स, आपको एक कंसेप्ट पता है कितने दिन में करना पड़ता है? कितने दिन में you have to make the payment? Students, you have to pay the payment within a 60 days का time period. So CGT liability on the disposal, anything, yeah, CGT, my capital gain transfer liability on the transfer of a residential property is to be paid within a period of 60 days, within a period of 60 days, guys. 60 days. So 60 days कब खत्म होता है मैम? 28 मार्च ना, तो मार्च के कितने दिन बचे मैम? मार्च 29, 30, 31, 33 days of March, 30 days of April, so 33 हो गए मैम, और 27, तो 60 हो गए. टिल 27 में आपको पे कर देना पड़ेगा. That's all. That's super. That's all. Students, आपने यहाँ पे भी 10 marks achieve कर लिए. Isn't it easy? Yeah, it's super easy. Yeah. Cool. Yeah, easy. Can I continue? Okay, chalo. Let's take a break of 2 minutes more. Then we can go ahead. Let's take a break of 2 minutes.
Yeah, let us start with 2 more questions and then obviously we are done with our section B also. चलो, yeah, we can start reading the question. You need to assume कि आज का डेट है 15th March 2023. Cool, चलो. Opal is 71 years, not 21. Okay, yeah. In this question क्या है पता? इन्होंने inherent taxes के बारे में बोला है. So if you check inherent taxes आ गया, VAT हो गया, capital gain taxes हो गया, these all can come for 10 marks. And ये concepts difficult भी नहीं है. अगर आपको परसेंटेज उनका थोड़ा सा बैक क्राइटेरिया भी पता है ना स्टूडेंट्स, तो दैट बिकम्स ईजी, क्योंकि परसेंटेज तो हमें याद करना है नहीं, उसके लिए तो वी आर हैविंग टैक्स रेट्स, इजंट इट? सो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ लेडी विच इज़ मोर देन लाइक एट अ ग्रेटर एज, और उनके पास ना काफ़ी सारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, कुछ लोन्स है, मॉर्गेज है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हर इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके ऊपर टैक्स क्या लगेगा, एंड क्या उन्होंने कुछ तो भी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया है तो उसके ऊपर टैक्सेस क्या लगेगा. सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस. ओके, सो लेट अस रीड दैट. Opal is 71 years aged and had a chargeable estate for inherent taxes proposed to be 950. मीन्स उनके जो inherent taxes के लिए जो proposed estate है, जो real estate है, which is 950. That is what they have assumed. उसमें क्या क्या है उनके पास? Students, she is having a property जिसकी worth है 374,000. So basically it is 3,74,000. Cool. So she is having a property of 3,74,000. Okay, so 3,74,000 is the valuation, and an outstanding loan है उनके पास, that is an outstanding mortgage is 160. So if I can calculate, she is having a property of this and a loan of 160. She is also having an LIC, that is life insurance, on her own life, and she had a value today at 350. But I know that we have to take the life insurance value at the rate which she is going to receive at the death. So she will get a pay of how much? So she will get a pay of 442. Yeah, that is something which we already know. Yeah, isn't it cool? In her event of the death. Yeah. Opal owes 22,400. Okay, so she has to take a loan, like, oh, she has to pay, like Opal owns 22,400 in respect of the personal loan from the bank, and she had also verbally promised that she is going to pay some fees to her nephew. Okay, so she is liable to pay 22,400 for some loans, and she has also promised that she is going to pay some legal fees. Guys, please take care of this. Opal expects even she is expecting at the time of her death the funeral expenses will be 5,200, that she is going to cover it from 6,000. So everything she has planned. Okay. And that cost she will be recovering from the amount she has invested in the savings account. Yeah, we know savings account individual can have. Okay, so that's cool. I'm so sorry. So she is having a saving account of 6,000, and from that 5,200 she can utilize it for her funeral. Okay. Under the terms of a will, okay, she has prepared a will also. Opal has left all her real estate to her children. Okay. Her husband is still alive, so she has made the will also, that she knows now maybe she will not have so much of days. So okay, she has made everything. Cool. That's cool. 14th August 2013, way back, like maybe 10 years back, Opal, the lady, has made a gift to her daughter. 1 lakh pounds. Okay, so she has initially made like way back. But in the current year, what happened, guys? In the current year, in 2022, on 7th November 2022, she made a gift of 2,20,000 to her son. Oh, current year she made a gift to her son. Okay, current year, ma'am, there is a gift. Current year, there is a gift that is to be taken care of. Cool. Both these figures are after deducting all the available exemptions. Cool. You should assume that both the values of Opal's real estate and the nil rate band will remain unchanged for the future. So they are giving us a hint. It's a nil rate band. Need not worry. Let's figure it out. What is the first question? Actually, you understood the backstory. Yeah, there is a lady. She is having some inherent property and some loans and etc. she had to pay. In the current year उन्होंने क्या किया? In the current year उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट दिया है 2,20,000 का. डॉटर को उन्होंने, उनके लड़की को उन्होंने लाइक वे बिफोर पहले दिया था. कुछ करंट ईयर की प्रॉपर्टी है, कुछ उनको लोन पे करना है, कुछ उनके डेथ के बाद फ्यूनरल के खर्चों का भी उन्होंने सेविंग्स अकाउंट में अलग से रखा है.
ताकि she has made a wholesome plan for her. Okay, let's see आगे का क्या situation है. What have they asked us in the question? What is the total value? Oh, what is the total value for the property and insurance policy? अच्छा, कौन सी चीज़? Property and IP, property and insurance policy, जो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग 950. तो पहली बात तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. LIC की क्या वैल्यू है? अगर आपको याद आ रहा होगा, मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो. प्रॉपर्टी 374, आउटस्टैंडिंग लोन शी हैज टू पे 160. कूल मैम. प्रॉपर्टी 360 है. 360 इज इट सो मैम? इट्स 374, सॉरी. Property is 374 and she has to pay that mortgage. Yeah, mortgage expenses. Ma'am, that is 160. Cool. Okay, this is something which is given. She has a life policy of 350. No ma'am, at the time of death what she'll get? 442. Okay, so that becomes the value 442. So if I make up the total, what will I get, guys? Am I getting these 656? Yeah, this is what they've asked us. If you check the answer, 816 no, 5 no, 656. Yeah. So this is the total value of the property. Is it not easy? Is it not easy? It is easy. We cleared 2 marks. We got 2 marks in this simple answer. That's all. Chalo, let's read the second question. Which two of the following amounts will be deducted? Oh. Which is the two deducted amount? Achha, she'll be getting any investments? No, ma'am. Can she give any funeral cost? Yeah, she gets exemption. And she has also taken some personal loans. Yeah, for that also she can get. Like over here, if you check, Opal has some 22,400 personal loan she has to pay, but she has verbally promised need not considered. But for funeral, ma'am, we can consider. So which are the two allowed expenses? So we have to do that. Now it's simple, isn't it? So let's see कि उनको क्या क्या allowed है. देखते हैं विच ऑफ द टू अमाउंट्स उनको डिडक्ट करेंगे हम कैलकुलेट करने के वक्त. उन्होंने अगर कुछ पर्सनल लोन लिया है ना स्टूडेंट्स, तो वो उनको मिलता है डिडक्शन. लीगल फीस जो प्रॉमिस करा हुआ नहीं मिलता. फ्यूनरल कॉस्ट मैम मिलता है. इन्वेस्टमेंट्स नहीं मैम. सेविंग्स में कुछ नहीं मिलता. कूल. चलो द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट अमाउंट ऑफ इनहेरेंट टैक्सेस विल बी पेड? अगर उनका वैल्यू इतना था गाइस, where she dies on 20 March, यही साल में. It's not like 2 years, 5 years, 10 years. नहीं. तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे मे भी हमें नीड पड़ सकता है कि हम ये चेक करें. और मुझे पता है, बट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप एनालाइज करो किस तरीके से भी राइट. गाइज, दिस इज द इनहेरेंट टैक्सेस. इफ शी गेट्स एनीथिंग, रेट ऑफ टैक्सेस, इफ शी डाइज, डेथ रेट गाइज इट्स 40%. डेथ के टाइम उसकी 40% चार्ज कर लेंगे. लाइक व्हाट नॉट टू बी डन इन दैट. या है ना, इजी. चलो ठीक है, पहले चेक करते हैं कि व्हाट इज शी लायबल टू पे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो आप चेक करो कि उनको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा. स्टूडेंट्स उनको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? स्टूडेंट्स उनको आप एग्जेम्पशन अगर आप चेक करो ना यहाँ पे, तो शी कैन गेट, शी इज़ अ नील रेट बैंड राइट. सो शी गेट्स 325. स्टूडेंट्स आउट ऑफ 325 आपको पता है शी हैज़ मेड अ पेमेंट करंट ईयर. किसको दिया है? उन्होंने अपने सन को भी कुछ पे किया 220. तो क्या बचा? दैट मच इज एग्जेम्पशन. ओके, मैक्सिमम एग्जेम्पशन. ओके, आई विल शो यू ओवर हियर. या can we start? Yeah, so what is her income? Students, her income over here we can see it's 950. So I can write over here 950. Guys, what is she getting an exemption for? अगर आपको पता होगा, a total exemption we just saw it, it's 3,25,000. बट उसमें से इन द करंट है ना, उन्होंने अपने सन को दिया है 220. हाँ, प्लीज़ माइनस करो, उतना तो आपने यूटिलाइज कर दिया. कितना है बचा कुचा एग्जेम्पशन? गाइस, मैं बचा कुचा एग्जेम्पशन इज दिस माइनस दिस. इट्स नॉट 1 लाख समथिंग. हाँ, 1,05,000. ओह, सो ये इनको और एग्जेम्पशन मिल सकता है. तो उनकी कितनी टैक्सेबल इनकम हो गई? इज इट 845? हाँ, अब उस पर कितना टैक्स पे करते आपको याद है? डेथ के टाइम स्टूडेंट्स वो 40% था राइट. यस, या मैम 40% वॉज अ डेथ के टाइम का रेट. या सिंपल, डोंट यू थिंक? 40%, 338,800. Am I getting this answer? Students, तो वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो प्लीज चेक. मैम इट्स 250. नहीं, 338. यस मैम. या
Is it so? Simple. Easy? 378 no, 335 no. Students, मिलते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें टैक्स में. यही रीज़न है हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये हम कर सकते हैं सॉल्व. चलो, we can go ahead with question number 24. By how much would the inherent tax be payable on the opal's death be reduced if she leaves for another 7 years? Oh, another 7 years. मैम आप इसको बहुत ज़्यादा लाइफ दे रहे हो. 7 years, next 7 years. या आपको पता है कितना मिलता है? याद करो. आपको सिर्फ उतना ही एग्जामेशन मिल सकता है. हाउ मच टैक्सेस, जितना कि आपने अपने बच्चे को कंट्रीब्यूट किया है उसका 40% का. इज यू रिमेंबर? या 40% years. So what can we get? It's 2,20,000. 2,20,000. Oh, I'm so sorry. 2,20,000 into 40%. Into 40%. Is it 88,000? Yeah. So that's easy. Cool. चलो. Let's go with the last question. And yeah, अब ये भी हमारा second scenario gets over here. Easy. पता है आपको सिचुएशन, आपको एक एनालाइज करवाऊँ. हर क्वेश्चन में ना आफ्टर हर क्वेश्चन लाइक उसमें आएगा कि यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. 2 आंसर करेक्ट रहेंगे. स्टूडेंट्स वी कैन नॉट मेक मिस्टेक इन दैट. बहुत ईजी रहता है, स्कोरिंग रहता है, थियोरी रहती है. या सिमिलर ओवर हियर. Which of the two following conditions must be met if Opal wants to make gifts? Oh, अगर ओपाल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से गिफ्ट्स पे करना है, सो व्हाट शुड शी डू सो दैट शी गेट्स द गिफ्ट्स एज एन एग्जेम्प्ट? तो वो गिफ्ट्स कितने होने चाहिए? मैम कुछ भी गिफ्ट होगा चलेगा? नो, द गिफ्ट्स ना शुड बी इतनी कि आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फर्क ना पड़े. और एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट मत दो. whatever is normal you can give that. That means, is it so the gift cannot exceed 10% of income? No, ऐसा कुछ नहीं है. Ma'am, the gift should be habitual. Yeah. Plus, Opal must have an enough income. अच्छा, आपकी खुद की तो लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल मेंटेन हो, उसके बाद पे करो. Yeah, that's all. Opal must make the gifts monthly, quarterly. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है whether she needs to make gifts or not. So yeah, कितना easy है. मतलब आपकी इतनी पे करो उनको, इतना गिफ्ट्स आप दे सकते हो जितना आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, जिससे कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट नहीं हो रही है. सो या इट्स ईजी. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे भी 10 मार्क्स स्कोर कर लिया. आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था. कैन वी नाउ गो एंड रीड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेक्शन बी? या पढ़ सकते हैं. या नीड टू स्टडी, दैट्स ऑल. The following information is available in respect of Claire Limited value. VAT. Students, my favorite, my personal favorite, VAT. So what it is, I'll just brief you out the scenario. क्या है इसमें? देखो स्टूडेंट्स, वैट आएगा ना तो एक चीज़ बहुत क्लियर रखने का कि वैट पे ना हमेशा 20% टैक्स लगता है, राइट? वैट. एंड वैट में there could be some sales, there could be some exempt sales, there could be some purchase. तो वी नीड टू कंसिडर कि वैट हमें कौन से पे अप्लाई करना है. क्या वैट का कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, या वी हैव टू इवन चेक लाइक कि वैट अगर है और अगर आपने नहीं पे किया है तो व्हाट इज़ योर लायबिलिटी दैट यू ऑल हैव टू पे. एंड अगर आपके पास वैट है तो वैट आप कैसे फाइल करते हो? स्टूडेंट्स, एवरी टाइम 4 रिटर्न्स हम पे करते हैं, राइट? 4 वैट के रिटर्न्स कॉन्सिक्वेंट, एंड वो भी एकदम टाइम पे करना ही पड़ेगा विद द पेमेंट्स, इजंट इट? सो या वी कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी. Invoices were issued for sales. अच्छा, सेल्स करा है 44,600 का टू द रजिस्टर्ड कस्टमर. 44,600 के सेल किया है. तो वी हैव टू अगेन थिंक, अच्छा मैम ये सेल्स में क्या ये टैक्सेबल सेल है कि इस पे वैट एडेड है? तो ये एक दिमाग में आता है, ठीक है? अच्छा, आउट ऑफ दिस फिगर, मतलब आउट ऑफ 44,600, 35,200 तो ऐसे सेल्स थे जो एग्जेम्प्ट है. अच्छा, एग्जेम्प्ट है मतलब मैम उस पर तो वैट लगेगा ही नहीं. ओके. एंड इन द बैलेंस ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स वो है स्टैंडर्ड रेट, मतलब मैम 20% वाला. द स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड इज एक्सक्लूज. यही तो जानना था मैम, इसमें इंक्लूड नहीं किया है. कूल, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक कि कितने पे टैक्स लगेगा? व्हाट विल बी द सेल्स अमाउंट जिस पे टैक्स लग सकता है? मैम इतने पे लगना चाहिए था बट इतने एग्जेम्प्ट है. सो कैन आई राइट लाइक दिस 44,600 माइनस 35,200? या
सो ये 9400 जो मेरा सेल्स है ना स्टूडेंट्स, उसी पे टैक्सेस लगने वाला है. या दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा. ओके, इन एडिशन टू द अबाव, ऑन 1st March, मतलब मेरा ईयर एंड का लास्ट मंथ, ग्लेशियर लिमिटेड, ओके, इशूड वैट इनवॉइस. अच्छा, मतलब मार्च एंड में उन्होंने एक और इनवॉइस बनाया, एक और बिल बनाया, जिसमें दे हैव सेपरेटली शोन. अच्छा, ये मेरा टैक्सेबल इनवॉइस है, इसके ऊपर ये ऐड हो रहा है इनवॉइस में, तो ठीक है ना मैम, उसका भी तो वैट हम ले लेंगे. ओके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने जो इनवॉइस बनाया है ना, बट उन्होंने आपने क्या बोला, यू कैन मेक मी पेमेंट लाइक 2 months में इक्वल. स्टूडेंट्स, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वंस यू हैव मेड अ सेल, वंस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड अ रेवेन्यू, आपको बुक करना पड़ेगा, वरना तो वैसे भी बैलेंस शीट्स में कितने सारे डेटर्स होते हैं. सो दैट इज समथिंग जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वैट की लायबिलिटी. लेट्स रीड दैट. In addition to the above, on 1st March 23, Glacier Limited has issued a VAT invoice for 8,000 plus VAT of 1,600. Ah, ma'am, 20%. Cool. चलेगा. To VAT registered customer in respect of the contract, which is to be completed on 15th April, like 2 months में. ठीक है, चलेगा. The customer paid the contract in 2 installments. अच्छा, 8,000 plus 1,600 था. 8,000 plus 1,600 आपका बिल इनवॉइस था. आई एम सो सॉरी गाइस, एक जीरो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है. दैट इज 9,600 एंड दे वांट टू मेक अ पेमेंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट. इज इज 4,800. हाँ मैम, ठीक है. 4,800 दे आर गोइंग टू पे इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. मैम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वी हैव टू ऐड दिस ऑल्सो इन द वैट. ओके. आगे, the managing director of the Glacier company is provided with free fuel ma'am, mileage ma'am, fuel ma'am, mileage ma'am, fuel ma'am, वो शायद रेट आ सकता है. Let's see. In her company's motor car, during the quarter ended on 31st March 23, the total cost of fuel for the business and the private was this. प्राइवेट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स. आई एम मोर ऑफ कंसर्न विद बिजनेस. 720 बिजनेस का है, ऑफ विच 270 इज प्राइवेट. ओके, कुछ the relevant quarterly scale charges. Okay, the charges are also there are 490. Cool. All these figures are inclusive. Acha ma'am, inclusive. So VAT are included in that. Yeah, cool. Let's see. What are questions? Points are given. Then for individual points now, they have made a question to be tested. Yeah, I'm just blocking my nose that I don't sneeze again and again. But it is not possible for me. I'm so sorry guys, super sorry. I'm so sorry. Yeah, for the quarters ended 30 September 2021 and 30 June 2022. Guys, 30 September 21 and 30. Let's resume the question. For the quarter ended on 30 September 21 and 30 June 22, the Glacier company was 1 month late by submitting its return. Guys, if he is late, he has to pay the late fees. That is 5% VAT. Yeah, you know, the liability is there. And in paying the related liabilities, all the other companies' VAT returns and all are submitted on time. So only 1-2 quarters returns are late. So by 1 month,
5% we need to pay. Okay. So we can go to the first question. What is the amount of output VAT? Output sales पे कितना VAT पे करना पड़ेगा? Sales पे कितना VAT पे करना पड़ेगा मुझे? Okay. What is the amount of output VAT to be paid in 31st March 23? So first हमें चेक करना पड़ेगा मेरा सेल्स कितना है. गाइस हमें पता है इनिशियली उन्होंने मुझे सेल्स बताया था. माई सेल्स वॉज 44,600 बट उसमें से एग्जाम सेल्स वॉज 35,200. ओके तो कितना सेल्स था गाइस मेरा? या 44,600 राइट. 44,600 मैम बट उसमें से ना एग्जाम सेल्स था आपके पास. एग्जाम सेल्स कितना था? यस इट वॉज 35,200. सो बेसिकली मैम मेरा कितना टैक्सेबल सेल्स था? इट्स दिस. Is it 9400? Yeah ma'am 9400. Students इसके ऊपर should I pay like 18% sorry 20% tax? क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ? हाँ क्योंकि इट इज़ इंक्लूसिव. नो मैम इट्स एक्सक्लूसिव. इंक्लूड करना बाकी है तो सिंपल 20% वैट मुझे ऐड करना होगा. सो दिस इज माई अमाउंट ऑफ वैट लाइबिलिटी. यू ऑल हैव टू ऐड इट. दैट्स ऑल. सो ये बनता है मेरा वैट लाइबिलिटी. इसमें तो मैम कुछ भी डाउट नहीं है. को सो या दिस इज माई वैट लाइबिलिटी. ईजी. बट खाली इतना ही है क्या? मैम एक और चीज़ था. सेल क्या था? सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ 8,000 यू हैव मेड एन इनवॉइस. उस पर वैट 1,600 था. गाइस आपने सेल तो कर दिया ना. यू आर गोइंग टू रिसीव इन 2 पेमेंट्स बट दैट डज नॉट मेक्स कि आप इसको रिसीव नहीं कर सकते. आप 1,600 तो रिकॉर्ड कर सकते हो तो कर लीजिए. दैट्स ऑल. तो हम क्या करेंगे? 1,600 विल बी माई अमाउंट विच आई कैन रिकॉर्ड इट. सो माई टोटल लायबिलिटी कितनी होती है वैट की? इट्स 3480. क्या 3480 तो गिवन है क्वेश्चन में. चेक करो चेक करो. हाँ मैम बी. सो योर आंसर विल बी बी. दैट्स ऑल. कूल. इजी. 2 marks अचीव्ड. 2 marks achieved. Yeah. Second question. Calculate the amount required to complete the following statement. एक sentence. The Glacier Limited would include an output of VAT कितना and an input of VAT कितना. अच्छा, don't know. In respect of oh ma'am, managing director's card. Oh ma'am, they are talking about the third question. Yeah. Third statement. Okay. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लेशियर कंपनी ने फ्री प्रोवाइड किया है फ्यूल जिसके बेसिस पे दे हैव टू मेक अ पेमेंट. सो अब ये क्वेश्चन आया तो आप ही मुझे बताइए ना. व्हाट विल बी द आउटपुट टैक्स? गाइस व्हाट विल बी द आउटपुट टैक्स? व्हाट विल बी द इनपुट? या अगर मैं इनपुट एंड आउटपुट की बात करती हूँ, इनपुट विल बी लाइक 720 क्योंकि दे हैव बीन यूज्ड एंड दे हैव मेड अ सेल्स ऑफ 490. कोई नहीं, इजी. 740 एंड 720 एंड 490. So yeah, it's over here. 490 basically 490 into how much percentage guys? 20. And is it inclusive? Yeah, ये inclusive है. Inclusive है. So आपको खाली value निकालना है. That means 20 divided by 120. 490 into 20 divided by 120 is equal to, you can find out the value. Yeah students, that will be 82. Like I can check out. 490 कितना है? मैम 120% है. तो 20 का परसेंट कितना होगा? That is what they have asked us. So 20 into 490 divided by 120 comes around to be 81.666. I can take a round off because उन्होंने बोला है take in whole. Cool. So it could be 82. Easy? Yeah ma'am. Easy. But students, what is input guys? Then what is input? Yeah, input ma'am वो 720 उन्होंने लिया था, right? 720 into 20. So yeah, that is going to be 720 into 20 divided by 120 is equal to, if you check it will be 120 only. So yeah, students, अब ये बनता है मेरा आउटपुट. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया. इनपुट एंड आउटपुट इट्स डन. इट्स ईजी. कुछ भी नहीं है इसमें करने का. थर्ड, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लेशियर. पूरा का पूरा क्वेश्चन. नाउ दिस इज माय सबसे फेवरेट आंसर. हाँ, फुल क्वेश्चन आई हैव कॉपिड सो दैट आई डिड नॉट गो अगेन एंड अगेन अपसाइड. व्हाट इज द पेनल्टी? अगर उन्होंने 1 month लेट पे किया है, 1 month लेट गाइज भी नो पेनल्टी. कितना है? 5% ही है वैट का लायबिलिटी. या सो दिस इज माई आंसर. 5% ऑफ द वैट लायबिलिटी. इज इट सो? इजी. अब ये बताइए सबसे इजी. 2 marks ऐसे ही मिलना है फ्री में. व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्लेशियर हैज टू मीट? क्या करना पड़ेगा? टू रिवर्ट अ क्लीन डिफॉल्ट सरचार्ज रिकॉर्ड. सबमिट 4 रिटर्न. हाँ मैम, रिटर्न उनको 4 सबमिट करना पड़ेगा ऑन टाइम. करेक्ट मैम.
सबमिट एनी 4 रिटर्न, एनी 4 मैम, एनी 4 ऐसा कुछ नहीं आता, 4 मीन्स 4, एनी 4 नो, रॉन्ग, बी रॉन्ग। पे 4 कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स, या लायबिलिटी भी मुझे पे करना पड़ेगा, चेक डी, दिस इज परफेक्ट। सबमिट 4 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स ऑन टाइम, प्लीज ऑल्सो पे द लायबिलिटी ऑल्सो ऑन द टाइम, येस बोथ द थिंग्स, मतलब आपको रिटर्न्स भी भरना है, लायबिलिटी भी पे करनी है गाइस। Who can not score 4 marks in this guys? Sorry 2 marks किसको नहीं मिलेगा मैम, एकदम आराम से मिल जाएगा, so it's a bonus marker. So yeah, Glacier Limited is required to issue a invoice, तो ये complete करो statement, okay. So statement क्या है, Glacier Limited will be required to issue a VAT invoice when dash is made to dash, और when a standard supply is made to a VAT registered customer, खत्म, it's कुछ नहीं, बहुत simple. Students, here we end section A and section B. मुझे लगता है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सबसे भी ज़्यादा ईजी है हमने जब ऑलरेडी सेक्शन सी करा हुआ है तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो फिर कोई बात ही नहीं है, राइट? इट्स सो नॉट ईजी, इट्स वेरी ईजी. नाउ लाइक आई एम नॉट हैम्परिंग इट ओवर ईयर ओनली, मुझे ना और 1-2 क्वेश्चंस करने हैं, सो उसकी वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो बच्चों आपने किया है, सो भाई हम तो बहुत अच्छे से पेपर लिखने वाले हैं. Right, we are going to clear this tax in the first attempt, like with a good extension marks. चलो, we can go ahead with section C. मैंने section C का ना आपको okay, I have made something red ताकि आपको ना वो टाइम ना लगे. Cool. Yeah, we can just go ahead. Yeah, I think it's visible. Yeah, let's read. Tax UK specimen 3rd section C. Section C. First question. The following scenario requires 2 requirements. हमें पता है the thing जो हम पहले कहते थे, अच्छा मैम 2 requirements है ना, तो पहले चलो requirement पढ़ो क्या है. Okay, चलो ना, you want, I'll not make anything red, I'll make everything black. तो हम ही red करेंगे. Cool. चलो. Okay, but then things I have made bold ना. So yeah, चलो मैम ये पूरी story line है, we know. Okay मैम, the first thing, what's the first requirement guys? What's the first requirement? Determine whether or not there will be an overall savings in the tax and NIC. मैम टैक्स और NIC की बात आ रही है. यू शुड गेट अ हिंट कि क्या करना पड़ सकता है मैम, हमको शायद टैक्स लायबिलिटी फाइंड करी है एंड मे बी मैम हमें NIC की भी लायबिलिटी फाइंड करी है, मे बी लेट्स सी. ओके, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 5th April, ओके, इफ सारा incorporates a business on this, okay, you need to assume something. And second question is also there. Yeah, okay, let's go and read what are the requirements. So yeah, this is the first requirement. Cool, let's see. Sarah is currently self-employed. That means कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, you are self-employed. So maybe आपके खुद के कुछ ट्रेडिंग बिजनेस होगा या something like that. Okay, if she continues to trade on herself, अच्छा खुद से करेगी अगर वो ट्रेड, if she is doing the trade right now, she is doing a trade on herself, so she'll be having what? She'll be having a total tax liability and NIC contribution at 1148. Acha, so they have already given ma'am. Yeah, so she is doing what in 2022-23 ना, she is doing a trade and on the trade she has to pay, मतलब ट्रेड कर रही है ना, तब उसकी लायबिलिटी कितनी आ रही है? 11,487. सो अब ना पता है इन द क्वेश्चन क्या है, शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या मैं मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही काम करूँ, मीन्स शुड आई डू लाइक दिस ओनली, या एक काम करती हूँ ना मैं इनकम टैक्स की जगह पे मैं कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हूँ, मतलब मैं कंपनी क्रिएट कर देती हूँ. ये हमने क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स, याद करना, हमने ये क्वेश्चन किया है और किया है. या अगर आप चाहो तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड के तरीके से भी अर्न कर सकते हो, बट अगर आपका मन हुआ कि नहीं चलो ना कंपनी बनाते हैं, चलो ना वी विल क्रिएट अ कंपनी, तो मुझे स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो व्हाट आर यू अर्निंग? मैंने कंपनी क्रिएट की तो शायद मैं वो कंपनी में क्या हूँ मैम, मैं शायद या तो शेयर होल्डर बन जाती हूँ या तो मैं डायरेक्टर बन जाती हूँ, सो दैट आई कैन अर्न समथिंग, इजंट इट? मतलब मुझे तो वो ओनर बनना है, तो आई कैन इधर भी शेयर होल्डर या तो डायरेक्टर. चलो ना, या तो डायरेक्टर बनते हैं या तो शेयर होल्डर बनते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे आस्क्ड अस. फर्दर however, हमारी जो सारा है, सारा इज कंसिडरिंग इनकॉर्पोरेटिंग हर बिजनेस ऑन 6th April. अच्छा, मतलब अब वो बिजनेस करना चाहता है, कैसे? कंपनी फॉर्म करके.
The taxable forecast of the total profits of new limited company, guys, it's new limited company, please take care. नया कंपनी बनाना चाहते हैं, and that too on 5th April for 50,000. अच्छा, the taxable profit they are expecting कि भाई 50,000 का उनको profit होगा, but before taking into account any director का remuneration. अच्छा, director कौन है देखते हैं. सारा विल पे हरसेल्फ. अच्छा, वो खुद को ही डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करेंगी एंड डिविडेंड्स भी पे करेंगी. गाइस मुझे बताइए, कैन इस कंपनी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन डिविडेंड? कंपनी पे करेगी डिविडेंड पे? नो, डिविडेंड इज एक्सेप्ट. इंडिविजुअल पे करेंगे, मुझे मिला है, मैं इंडिविजुअल हूँ तो आई हैव टू पे, बट एज अ कंपनी एज अ होल डिविडेंड इज एक्सेप्ट. ओके, द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट विथड्रॉन. कूल. हो गया, क्वेश्चन इतना ही था. लेट्स सी व्हाट हैव दे आस्क्ड अस. डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर विल बी एन ओवरऑल सेविंग्स ऑफ टैक्स एन एनआईसी. क्वेश्चन इनका क्या है पता है? आप जो ऑलरेडी अभी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यू आर पेइंग अ टैक्स ऑफ 11,487, राइट. अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर जाओ तो क्या आपका सेविंग्स होगा या टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा? नोट्स सर, मैम, यू कैनॉट इग्नोर नोट्स. आपको एक्चुअली नोट्स देख के पता चलेगा कि आपको मार्क्स कहाँ मिलने वाले हैं. आई एम द फर्स्ट पर्सन और द लास्ट, आई डोंट नो, बट मेरे लिए नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल बाय सारा. कैसे इनकम टैक्स पेएबल कंसीडरिंग क्लास 1 क्लास 2? नहीं मैम, क्लास 1 खाली. ये व्हाट इज दिस? इनकम टैक्स पेएबल बाय सारा, द क्लास 1 एनआईसी पेएबल बाय सारा एंड द न्यू लिमिटेड कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स भी फाइंड करना है आपको. आहो स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्लास 1? क्लास 1 आपको पता है, बाय नाउ यू नो दैट. क्लास 1 में वी हैव एम्प्लॉयर, वी हैव एम्प्लॉय. किसी का टैक्स अगर पे करना पड़ता है, लाइक इफ आई एम गेटिंग एनीथिंग इन कैश तो एनआईसी कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट्स डू दैट. सेकेंड, द न्यू लिमिटेड कंपनी विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी एलआईसी. ठीक है, चलो अच्छी बात है, न्यू लिमिटेड को नहीं मिलेगा एनआईसी का कुछ भी अलाउंसेस, कोई नहीं. यू शुड अस्यूम दैट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स आर नॉट चेंज. हाँ, दैट इज 19% का 19% ओनली. कूल. ओके, लेट्स नॉट रीड सेकेंड क्वेश्चन. आफ्टर रीडिंग दिस, सी डोंट वरी, आई एम जस्ट फॉर्मुलेटिंग द आंसर्स फॉर यू. आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो भी डोंट वरी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सारा, दिस इज माई लाइक, किसी किसी को फोबिया होता है ना कि सेक्शन ए सेक्शन बी. आई हैव ऑलवेज मेड माई सेक्शन सी एज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे मार्क्स मिलेगा, कुछ तो भी मिलेगा एंड अच्छा ही मिलेगा. अगर एक बार सेक्शन सी आता है ना स्टूडेंट्स, सेक्शन ए एंड बी तो हम कर ही लेंगे. इट्स लाइक दैट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. चलो करते हैं. लेट्स सी सारा ने क्या बोला है. ओके, पहले तो उनके ट्रेडिंग इनकम है, राइट, ट्रेडिंग. सो लेट्स राइट द ट्रेडिंग इनकम. स्टूडेंट्स, उनकी ट्रेडिंग इनकम उन्होंने दी है, कितना है? टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, उनकी टैक्स लायबिलिटी प्लस उनको एनआईसी का भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन द क्वेश्चन दैट दे आर सपोज टू पे हाउ मच. अगर वो ट्रेडिंग इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, तो उनकी लायबिलिटी आती है 11487. कूल. हाँ मैम, 11487 उनकी लायबिलिटी बनती है. या दैट इज समथिंग विच वी नो. ओके, बट अब क्या करना है उनको ना सारा को अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से चेंज करके उनको ट्राई करना है. इफ आई बिकम अ न्यू लिमिटेड कंपनी तो क्या होगा? Let's see if she wants to be converted into a new limited company. Let's see what can happen if she wants to enter into a new limited company. New limited company. देखते क्या होता है. स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यू लिमिटेड कंपनी बनती है तो उन्होंने कुछ दिया क्या? प्रॉफिट्स. हाँ मैम, प्रॉफिट्स इज गिवन, थॉट ऑफ प्रॉफिट लाइक एस्टिमेटेड प्रॉफिट. हाँ, फोरकास्ट. मैम प्रॉफिट्स कितना था? 50,000 पाउंड्स. या इसी पे टैक्स पे कर दे? नो मैम, सारा हैज़ टू गेट द इनकम एज पर न्यू. डोंट यू थिंक अभी सारा को भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि सारा को कितना मिलने वाला है इनकम. लेट्स सी व्हाट सारा कैन गेट द इनकम एज पर न्यू लिमिटेड. सो सारा को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको पता है ना, सारा डिविडेंड, सारा विल गेट डिविडेंड ऑल्सो. सारा विल गेट द डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन ऑल्सो. येस, सो शी विल बी गेटिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन.
कितना मिलेगा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन? स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज 30,000 एंड 10,000 क्या मिल रहा है उसको? डिविडेंड. या शी इज गेटिंग सो मच. तो दैट मीन्स अगर मैं उसका टोटल कर दूँ, एम आई गेटिंग 40,000 या 40,000 पे टैक्सेस पे कर दूँ? स्टूडेंट्स कंसेप्ट याद करो. इंडिविजुअल. इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन 1 lakh, 40,000 से लेस है, राइट? या इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन 1 lakh, सो इट्स लेस देन 1 lakh, आपको कुछ मिलता है, राइट? फुल पर्सनल अलाउंसेस यू गेट, फुल. So you are liable to get the full personal allowances. Yes, true. So कितना मिलेगा मैम? -12,570. Questions में it will be given, that is in the sheet. Okay, so this is my total taxable liability. मतलब ये मेरी total tax है. So this is my taxable profit. Taxable profit. चलो इस पे टैक्स पे कर दूँ? हाँ मैम. चलो ना, कर दो ना पे. मैम बहुत इजी है मैम, इसका तो फर्स्ट स्लैब में आता है. मैम आर इनकम इज सो लेस मैम, सो शी नीड्स टू पे ओनली 20% टैक्स, दैट्स ऑल. या एंड यहाँ पे हमें लगता है कि हमने सही कर लिया आंसर. स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी नॉर्मली मेक अ मिस्टेक. यहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा स्लैब रेट है. स्टूडेंट्स, ये मेरा स्लैब रेट क्या है? मेरा स्लैब रेट इज दिस 0 से इतना टू 20, 40 एंड 45% इज माई स्लैब रेट. तो मुझे लगा कि आई एम फॉलोइंग इन दिस, सो आई पेड दिस. स्टूडेंट्स, याद है इसमें यू आर गेटिंग अ डिविडेंड. के लिए क्या करना था मैम? अगर आप फर्स्ट स्लैब में आते हो, फर्स्ट बैंड में आते हो, तो इनिशियली 2000 तक तो डिविडेंड यू नीड नॉट पे, उसके ज़्यादा यू हैव टू पे. यस, अगर ये जिसको भी अभी हिट हो गया है ना स्टूडेंट्स, वेरी गुड. ओके. सो फर्स्ट आपको ये अमाउंट में से 27 जो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है मैम, ये दिस इज माई टोटल प्रॉफिट 27,430. उसमें से आपका रेम्यूनरेशन क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज योर रेम्यूनरेशन डायरेक्टर का? इफ यू कैन चेक स्टूडेंट्स, आपका डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना आ रहा है मैम? नहीं मैम 40,000 नहीं मैम, इधर मेरे को कुछ अलावेंसेज भी मिल रहा है. सो आई नीड नॉट कंसिडर राइट नाउ, सो दैट विल बी माई बैलेंसिंग फिगर मैम. But ma'am, यहाँ पे you are getting some dividend. What is a dividend, guys? Yes, that you can take it, ma'am. Your dividend is 10,000. So ma'am, ये dividend में से ना जो balancing figure है वो मेरा बनता है other income. That is this minus dividend. On this अब मेरा bands लगेंगे. Cool. Out of this dividend, guys, we know 2,000 is exempt. Students, what is remaining? Ma'am 8,000 पे ना taxes पे करना पड़ेगा. आप फर्स्ट स्लैब में आ रहे हो, राइट? तो व्हाट इज द टैक्स रेट गाइज? इट्स 8.75%. सो व्हाट कैन बी योर टैक्स गाइज? व्हाट कैन बी योर टैक्स? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, आपका टैक्स आता है इस पर 700, इसका तो 0. कूल. बट व्हाट अबाउट दिस? इट इज फॉलिंग इन द फर्स्ट बैंड इटसेल्फ, सो 20% टैक्स. 20% टैक्स. इज इट नॉट जस्ट दिस? या. सो अब जो मैं टैक्स लूँ, सो दिट विल बी दिस प्लस दिस will be the total. That is 700 plus 3,486. So 4,186 is the tax. 4,186 is the tax if she is individual. But students, क्या खाली इतना ही है मैम? हमें पता है वो NIC का भी आएगा, क्योंकि there is an employer and employee वाला situation now, है ना? Employee and employer वाला, तो NIC भी आने वाला है. तो चलो let us write with NIC also. देखते हैं NIC का क्या है implications हमारे क्वेश्चन पे. Yeah, need to do that. Yes. Let's figure it out. NIC का complications. NIC, but NIC किस पे मिलता है मैम? दोनों पे भी. Class 1 employee, Class 2 employer पे भी. So yeah, let's take Class 1 employee को ध्यान रखना. Students, बैंड याद है? 1 to 12,570. मैम 12,570 to 52 कुछ था ना? 5270 या 5270. Students, what was the income first of all? वो देखो. What was the income? 30,000 मिलेगा ना? 30,000 remuneration, isn't it? Yeah. Rate, ma'am, 0%. It is 13.25%. Yeah. So what is the tax, ma'am? Nothing. So 30,000 से minus करो. 30,000 minus 12,570. You multiply this, you get the total.
Is it this? We can just take the round off and get the value. Yeah. मिल गया स्टूडेंट्स, ये आपका होगा टैक्स लायबल फॉर योर क्लास 1 एम्प्लॉय, क्लास 1 एम्प्लॉय. बट स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट क्लास 1 एम्प्लॉयर? हाँ, क्लास 1 एम्प्लॉयर स्टूडेंट्स चेक करना. हाँ, पेपर में इट विल बी गिवन टू यू ऑल, इट विल बी अवेलेबल, आपको अवेलेबल होगा. लाइक 1 to 9100 तक क्या है, स्लैब 1 to 9100 टू फर्दर अगर आप जाओगे एंड अबाउ, लाइक एंड नहीं, टू नहीं, सॉरी, एंड अबाउ क्या है स्लैब रेट्स. सो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सो नीड नॉट वरी दैट. याद नहीं करना है. 15.05% विल बी गिवन. या सो आपके पास कितना था क्लास 1 एम्प्लॉयर? स्टूडेंट्स यहाँ भी गड़बड़ मत करना. इट्स 30,000 माइनस दिस, सो 30,000 minus 9100. So this is the slab. So if I multiply this, I get the valuation. Again, students, मैंने इसको round off कर लिया, so it's this. Don't you think बहुत easy है? हाँ, ये तो हो गया इंडिविजुअल का गाइस, इंडिविजुअल का. बट अब मुझे ये तो मैंने सारा की इंडिविजुअल कंपनी निकाल, सारा का इंडिविजुअल्स आई टुक. बट अब मुझे चेक करना है कि वो कंपनी की प्रॉफिट्स क्या होगी. न्यू लिमिटेड का प्रॉफिट इज 50,000. सो लेट्स डू फॉर कंपनी ऑल्सो. Let's do for company 2. And new limited की profits. So initially क्या profits are students? हाँ मैम, ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिया है ना उन्होंने. ट्रेडिंग का प्रॉफिट इज व्हाट स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग की प्रॉफिट गिवन इज 50,000. बट आउट ऑफ दैट दे हैव टू डू सम एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का क्या नाम है मैम? एक्सपेंडिचर में से उनको ना डायरेक्टर की फीस पे करनी है, या एंड द क्लास 1 एम्प्लॉइज एंड ऑल. या डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दे हैव पेड 30,000. पता है ना, कंपनी को अपने क्लास 1 एम्प्लॉयर्स का भी पेमेंट करना पड़ता है. स्टूडेंट्स यू शुड नो दिस, है ना. सो क्या है कॉस्ट? इज इट 3145? या व्हाट एम आई गेटिंग द टोटल अमाउंट मैम? दिस students, this is the profit for new limited company. This is the profit for new limited company. This is the profit. और टैक्सेस, और उस पे ये लोग पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स. हाँ, सिंपल ना. कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे मैम? कॉर्पोरेट टैक्स इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ व्हाट? 19%. ये वो क्या आएगा मैम? दिस into 19%. That's all. So this is my tax. This is my tax. Corporate tax is this. Can I take the total tax? अब मुझे टोटल टैक्स मिल जाएगा. हाँ मैम प्लीज़ चेक कर लो ना टोटल टैक्स कितना है. टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? वो इस इंडिविजुअल को टैक्स सारा को कॉर्पोरेट टैक्स भी भरना पड़ेगा मैम, या ये एम्प्लॉयर का भी टैक्स पे करना पड़ेगा, या एम्प्लॉय का भी टैक्स पे करना पड़ेगा. ओ माय गॉड मैम, या खुद का भी टैक्स पे करना पड़ेगा. कंपनी बनाओगे तो सब करना पड़ेगा मैम. शी इज़ लायबल टू पे 12,843 टैक्स. या इतना उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. ये आपको नहीं लगता कि उससे बेटर तो वही था कि वो है ना, इससे बेटर तो वही था कि वो कंपनी ना बने, राइट? नाउ शी इज़ टू पे 12,843. अगर चेंज नहीं करती तो शी वुड हैव ओनली पेड 11,000. अब मैम ज़्यादा पे कर रही है. या so we can write accordingly कि she is paying extra, so it's better that she should not transfer it. Yeah, she should not transfer it. So better यही था कि वो जो कंपनी जो खुद से वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे ना, that was actually tax saving system, not this. So when I now read the second question, उन्होंने वही बोला है कि please determine कर दो, advise whether Sarah as to why her proposed basis of extracting profit from the new company is not okay, is not optimum for tax purposes. Because what happens over here is, if she is choosing to pay as a tax purposes from the perspective कि वो भाई company बन जाए, तो her tax expenses are actually exceeding as what compared to what she is earning from the employed, like self-employed. Okay, so this is what the answer is. I just wanted to show you, मतलब यही बार बताना था कि भाई ऐसे भी मतलब इस तरीके से पेपर बनते हैं. कूल. So students, हमने काफ़ी अच्छा रिविजन कंप्लीट किया है एज ऑफ नाउ. एंड अगर हम देखने जाएँ, ओके मैं जस्ट ये सब ना मैं क्लोज कर रही हूँ बस ऐसे. आई डोंट वांट टू से दैट, आई डोंट वांट टू से दैट, नो आई डोंट वांट टू से दैट. ओके कूल. चलो स्टूडेंट्स, तो हमने एक्चुअली अब तक की रिविजन सीरीज़ में क्या कवर किया?
सो या दिस बीइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द रिविजन, हमने डे 1 तो बहुत अच्छे से कवर किया अबाउट द वे द एग्जामिनेशन में आपको पेपर देखने मिलेगा आपके प्रैक्टिसेस के लिए। स्टूडेंट्स ये वर्ड बिल्कुल मत भूलना कि आंसर्स आर नॉट अपडेटेड। आंसर्स आर नॉट अपडेटेड, अगर अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ चेक द अपडेटेड वर्जन, ठीक है। आप अपडेटेड आंसर चेक करो, उसके बाद वैसे आप प्रैक्टिस करो आंसर्स करने की। स्टूडेंट्स माय थॉट प्रोसेस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज़ कि पहले तो आपका ना एट द एंड तक आपका सारा कुछ रिविजन हो जाना चाहिए बाय द लास्ट 10 days। मीन्स आपने सब कुछ प्रैक्टिस किया होगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम का किट भी पहली बार ओपन कर रहे हो, नहीं 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 नहीं। आपने सारे स्टडी मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए होने चाहिए, नो मैटर इट इज़ वट एवर बुक यू रेफर। इंस्टीट्यूट्स की बुक रेफर करो, आप कोई BPP का प्लान, एनी द बुक्स यू रेफर, आप जो रेफर करते हो वो ACC के रिसोर्सेज रेफर करो, सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि कोई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि भाई अलग ऑथर की बुक का लैंग्वेज इज डिफरेंट, अलग ऑथर की बुक का लैंग्वेज इज डिफरेंट, बट टैक्स में ऐसा सिचुएशन होना इट्स नॉट चांस, इतना नहीं है। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, हमारा उतना जल्दी ग्रिप बनता है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, 3 hours इज़ इनफ ऑफ टाइम कि आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको। पता है, सच में इनफ है। एंड मैंने तो नहीं बोला कि आपको 100 में से 100 ही लाना है, बट आपका एम 80 से लेस नहीं होना चाहिए। अगर 80 से कम गया ना स्टूडेंट्स, 50 पास होना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ भी आना चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है एंड एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बाकी है, तो इग्नोर कर दो उसे। मीन्स फिर आप उसमें ही मत लेके रहो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक कंसेप्ट के पीछे काफ़ी अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, आप उस पर ध्यान ना दो एंड वहाँ पे भी सिली मिस्टेक्स करने की चांसेस हो। सो टाइम आपको मैनेज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, है ना। आपको खुद को आपकी स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि भाई मैं ये टॉपिक्स में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इनकम टैक्स बहुत अच्छे समझ आते हैं, तो मुझे उस पर फाइंड करना चाहिए, राइट, रेदर देन थिंकिंग ऑफ द अदर थिंग्स। सो प्रैक्टिस करो पेपर्स, प्रैक्टिस करो मॉड्यूल से, प्रैक्टिस करो अपने बुक से, स्टडी हार्ड, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड trusting you. Students tax is the easiest paper and I am looking forward to meet you all. जिनकी अगर एग्ज़ाम्स नहीं है, मे बी हम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मिल सकते हैं। ये तो सिर्फ हमारा रिविजन क्लास था जिसमें मैंने बहुत कम समय में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने की इच्छा रखी, बट इन द नॉर्मल क्लासेस हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं कि हम जो पेपर जो स्टूडेंट्स 3 hours में भी फुलफिल नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट से उसको 2.5 hours में फुलफिल करवाने की प्रैक्टिस करवाता है। सो या दिस इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ लक्ष्य। एंड जिनको भी लाइक मे बी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट जिनको भी चूज़ करने हैं क्लासेस, दे कैन वाइजली टेक द क्लासेस। एंड स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, फ्यूचर आपके हाथ में है। एंड बस अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो, टाइम कभी नहीं जाता। एंड द थिंग आई टेल यू, टैक्स के लिए ना हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो कहाँ करना है, हमें इन्वेस्ट करना है अपने आप में, हमें इन्वेस्ट करना है हमारे नॉलेज में, क्योंकि एक वही नॉलेज है जो हमसे कोई भी नहीं चुरा सकता। स्टूडेंट्स, हमसे कोई नॉलेज नहीं चुरा सकता। एंड नॉलेज बांटने से बढ़ता है। देयर इज़ व्हाट आई टोल्ड यू द डे वन। मैंने मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पीछे रख के मैंने पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया नॉलेज बांटने से बढ़ता है। एंड येस स्टूडेंट्स, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। या सो नीड नॉट वरी, आप लोग भी आराम से अच्छे से पढ़ाई करो, खाते रहो एंड एन्जॉय योर लाइफ। अपने पैशन को बिल्कुल मत छोड़ो। पैशन अगर छूट गया ना स्टूडेंट्स, काम करने में मज़ा नहीं आएगा। सक्सेस तो है ही हमारे पास, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड या अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, लक्ष्य इज ऑलवेज देयर, चैट्स में आप हमें रिप्लाई कर सकते हो। सी या अप टिल द नेक्स्ट। थैंक यू। आई होप आपको ये रिविजन वीडियोस काम आए होंगे। थैंक यू।